Good morning, everybody. Can you all hear me? I can hear me. First of all, thank you all for being here, and a warm welcome to everyone who's come rushing here in the morning. I don't know how many of you have had a chance to have breakfast. I hope you have. Today is a very special day for us. बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज. हर साल, every year, we come on this day to talk about a very important issue, which is elder abuse. आज के दिन का नाम है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे. ऑफिशियली इट इज़ टुमारो, पर हम उनको आज मार्क करते हैं. इस साल हमने एक मुद्दा उठाया है. वी पिक्ड अप एन इशू विच इज़ वेरी निगलेक्टेड, हार्डली टॉक्ड अबाउट. दैट इज़ द इशू ऑफ वुमेन एंड एजिंग. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द नंबर ऑफ वुमेन टुडे सिटिंग इन द क्राउड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a warm round of applause for all the women who are here. And thank you for all the men who've come supporting them here. And this mudda jo hai, women and aging, invisible or empowered. A lot of thought went into आज के दिन को क्या बुलाए हम, invisible or empowered. हमने सोचा we will leave it to you to decide at the end of the day whether you feel that today's older woman is empowered or invisible. बहुत ही गंभीर मुद्दा है. हमारे घरों में, हमारी पूरी जिंदगियों में, these are people that we have grown up with. The one thing I have been asking people in the last 2 weeks कि आपके घर में जो older women रहती हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, they are your carers, they are your बच्चों के carers. आपने लास्ट टाइम कब उनसे पूछा था कैसी हो माँ, आप कैसे हैं, सब ठीक है? And I think that is why we are here today, to raise this issue of acknowledgement, of recognizing them, and ensuring that we see them. So without further ado, we're going to start today's function auspiciously, as always, with the lighting of the lamp. I would request on stage my colleague Anupama Datta, Dr. Ritu Rana, Fanny Bilimoria, ma'am, would love to have you on stage. Mrs. Chavla, Kavita Sethi, Veena Sethi, please आइए and help light the lamp. I would request my colleague Nilibha to come out and help. Thank you so much. I would request if the lamp could be taken backstage. Well, while that is happening, I would like to now call upon stage Mr. Rohit Prasad, the CEO of Helpage India, to give the welcome note. Rohit.
Good morning and namaste and greetings to all of you. On behalf of HelpAge India and along with Ms. Rumjum Chatterjee, our Vice Chairperson, and Mr. Kiran Karnik, our Chairperson, who have joined us today, it is my privilege and honor to welcome all present here and also those who have joined online. Our partners, funders, collaborators, and cause supporters help us move forward. So a special welcome and regards to all the senior citizens who have joined from the senior citizen associations. Thank you so much for joining today. We are also privileged to have today with us distinguished experts who will be sharing their perspectives during the later session. Ms. Urvashi Prasad from Niti Aayog, Dr. Meera Khanna from Guild of Service, Professor Pinky Mathur from OP Jindal University, Dr. Mala Kapoor, gerontologist, and ACP, Dr. Rita Dhamija from Delhi Police. Thank you so much for joining us. So today we are here to mark the World Elder Abuse Awareness Day. Just the definition of elder abuse itself will shake one's moral conscience and is really heartbreaking. I'll read it out to you. An action occurring within a relationship of trust which causes harm or distress to an older person. And the aspect about the relationship of trust breaking is the most important one. But in Indian culture and traditions, we have always cherished the values of caring for our elders. Yet, we will hear more often now about parents being thrown out of their homes or abandoned, father or mother who got beaten by their children, property-related disputes, verbal abuse, neglect, and insensitivity. This is very uncomfortable to talk about, but it is simply an unacceptable breach of trust. Surveys show that elder abuse is rising. On an average, 50 to 60% of the elders say that elder abuse is prevalent in the society, and 10 to 15% of them have actually faced the abuse. But how many of us are even aware of this? It may be happening around us, but goes unnoticed, stays hidden, and less talked about, and almost often unreported. So when I started working in HelpAge, it was shocking for me to learn that such a term or a notion exists, and it may be for many of you too. So the question is that how do we stop it? So when we do the surveys, we ask the elders, what are the ways in which this can be stopped? And three main points came up. First and foremost, suggestion was always to sensitize the family and children and reinforce the values of respect. परिवार के साथ परिवार के साथ जुड़ा रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा उनकी तरफ से रही है. Even if the family and kin are ill-treating, elders try best to hold the family together. So we need all the support of the society, all stakeholders to spread awareness, refuse to abuse, and as we always say, there is no excuse for abuse. Second most important point that came forward is economic independence and participation. They all said that financial dependence is basically creating the risk for abuse. And as we know in our society, women as they age, or the elders, the financial dependence tends to rise. An old age pension is an important part for the disadvantaged, and as HelpAge we have been advocating that at least rupees 3,000 per person per month becomes the universal basic minimum pension in the society. In rural areas, HelpAge runs elder self-help groups, and they are basically for increasing financial and social inclusion, and through savings and income generation, both independence and dignity are retained. But the third is strengthening recourse. If the abuse is happening, what are the help options that they have? Such as from the communities, senior citizen associations play a very important role there. Helplines. The Government of India, Ministry of Social Justice has established a pioneering elder line. It's a helpline for the elderly called Elder Line 14567. This is across the country, and HelpAge is proud to be associated with it as implementing partner in 8 states.
The other option is the legal option, which is always the last resort for any elderly. When pushed to the brink, that last resort is there. The Maintenance of Parents Act is an important such legal recourse. But how many of them are aware? It was set up in 2007, and post 10 to 12 years later, just 15% of the senior citizens are aware of it. So collectively, we need to make sure that people, the elders, know about the provisions that are available for them to act on if needed. Every year, HelpAge marks WEAAD, or the World Elder Abuse Awareness Day, with a national level report on elders' lived experience. While some of the other reports are there, and we know that, we ask the elders, we go around the country and ask the elders what is their experience of living a life in old age. And this brings out many different aspects. Last year in COVID context, one of the report that we came out was called Bridge the Gap, because we found a huge gap that was widening, it was increasing across many systems, pension system, health system, care systems. And we advocated for bridging that gap through policy measures, societal action, and community-based changes. This year, we are focusing on one of the most important dimensions of aging, the gender dimension, as Sonali mentioned, what is commonly called feminization of aging. It's a technical term, but let me just characterize some aspects around that for you. We all know that the population of India is young now. It's a young country with the young dynamism behind it. But it's also true that India has the second largest elderly population in the world. And India will age rapidly over the next 30 years. 14 crores elderly 60 plus population is currently now. It will rise to 30 crores over the next 30 years. So from 1 in 10, 1 elderly in 10 citizens, it will become 1 elderly in 5 citizens. That is how the society is going to change, not in a long time span, but in the next 30 years. But with women living longer, we are going to have more female elders in the aged group. But if you look at just the total women population, not the aging population, the total women population, in the next 10 years, by 2031, women elders' share in the total women population will rise from 11%, that is 7 crores, to 14% or 10 crores. And if you take the 50 plus mark as a cutoff mark and say, what about the population beyond that? The share will be much higher at 25% of the women population. So if you have 1/4 of the women population who will be above 50 plus and 14% above 60 plus. Clearly, this is a segment that is calling for huge attention, more prioritization. But numbers aside, the concerning situation is more of high vulnerability and the gender inequality gap when compared to elderly. So we always look at statistics and say population ka figure ye hai, elderly behind hai. But if you look at within the elderly, the women elderly are even far greater behind. You take any socio-economic metric, literacy, economic independence, female elders lag male elders by a factor of 2 to 3 times. And this statistics is available in our report, in the LASI report, and many other reports. So the gender gap for women elders is stark and unfortunate. But even what is most disturbing is what is our subject of today's attention is the invisibility of older women in the society space. In one of the old age homes that I visited, and you may have also come across it, it was written, कि इन सूखे पत्तों पर तुम अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पनाह मांगी थी. So this is not what the older woman is saying, because the older woman doesn't ask. She is always the giver. And we know this best in the form of our mothers and grandmothers. But almost always, as children and sons, our most typical stance, and I'll just borrow a few lines from the famous song, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मां, तुझे सब पता है ना मां, तुझे सब पता है मेरी मां. And that is what our response as individuals in society has been, that it's Ma, you please try and understand. Ma, aap samajh lena.
Women elders have always been as givers who keep sacrificing. They are the silent pillar of families, the eternal caregivers, but at the same time, they continue to be neglected, ignored, and invisible. So, the report we are releasing today is purposefully titled as a question: Women and Aging, Invisible or Empowered? महिलाएं और बढ़ती उम्र, गुमनामी या सशक्तिकरण. And we look at this through many lenses, dimensions around health, access to care, economic participation, decision making. And my colleague Anupama Datta will present the findings, and the experts I mentioned will throw more light on it. But a key question I want to highlight today is that within the gender empowerment approach, when we look at women, why is it that the cause of older women is a forgotten agenda? It is undoubtedly true that early childhood, adolescent phase, and the reproductive phase deserves significant attention. And government has taken many steps to empower younger women, and the recent National Family Health Survey is a testimony to that. But why is it that the line stops almost around age 50, be it the policy focus, research on older women, programs priority of CSR, development funding agencies, and philanthropists? Gender inequality would be incomplete without inclusion for women across all ages. So today I ask you to reflect on women and aging, as women elders find themselves on the spectrum between invisibility and empowerment. Our campaign, therefore, today is titled Main Bhi Hoon. I am also there. This is not what the elderly woman is saying. It is the writing on the wall. These are lines for us to see in the mirror and recognize, to give greater attention to a segment of our population that deserves better, deserves more, and may never ask, and therefore a bigger obligation on us. We'll now play the campaign film. Thank you. You see me every day, but do you ever really? I look after you each day, but do you see me truly? I have the money to spend, but it's all yours to give. I have nothing to call my own, yet it is for you I live. I'm not as strong as I earlier used to be. My bones now ache a lot. Can't you simply see? I no longer have beside me the one who would grow old with me. Life took him away, and I thought, now you would look after me. I know sometimes I get angry, and I test your patience a lot. But remember, sometimes I forget. Have you ever given that a thought? Your raised voice really hurts. It shatters like pins inside my heart. I know you don't mean to raise your hand, but that's only the start. It hurts me deeply too. Do you ever understand? I don't need much from you, just a supporting hand. I want to spend my days working and earn my rightful place in this world. But chances seem so few for those opportunities to unfurl. Yes, I have the fear of falling. My eyes are not what they used to be, but my spirit is still strong, and there is still much juice left in me. Years have given me more experience, so much I can contribute. If only you would see me. I have many attributes. I'm so proud of you, of the person you've become today. I watched you come into your own, day after day. Now that you've grown older and have a family of your own, maybe you will understand the value of your mom. I look after you still, and now your little ones too. I do love them dearly, but sometimes I need some time off too. I remember the sleepless nights, the tiredness and your constant waking. Today, as you make your grown-up plans, I'm nowhere in the decision making. I'm not just a mother, a sister, a grandmother or a wife. I'm a woman who has dreams, but it always comes with a price.
Dependence is not what I crave for, but to stand on my own 2 feet, feel that I'm more than enough, to feel confident and complete. So don't treat me as if I'm invisible. I'm right here, not someone new. I've been with you all along. Just remember, मैं भी हूँ. I think the film said what it needed to say. हाँ जी बताइए. बिल्कुल सर, एक ही छोटी सी बात. हाँ जी सुरेश जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, एंड आपका बहुत ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है. हेल्पेज जो है, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ हम स्प्रेड हैं. तो हम जो भी यहाँ पे दिखाते हैं, हमारे साउथ के जो लोग हैं, हमारे ईस्ट और वेस्ट के जो लोग हैं, वो सब देखते हैं. तो वो कहते हैं कि अगर आप हिंदी में करो तो मैम हमारे लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए हमने अभी न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ किया है. बट आपका पॉइंट सर आँखों पे. आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट Mr. Kiran Karnik, who is our chairperson for Helpage India, to set the tone for today. Kiran. Good morning, and let me add my welcome to Rohit's. After that very moving film, audiovisual, there's little you can say to really amplify the problem that we face anymore. We're aware of the terrible problem of abuse of elders in our society. It's an issue that's been long there, long hidden, not spoken about, mainly because this happens almost completely within the family, within the four walls of a house. And therefore, it's largely invisible. But in this context, what women face, elder women face, is so much more difficult. Often they're alone, completely, in all senses, and they're very dependent. Not just financially, as Rohit said, but also emotionally and psychologically. They need that support. And that's not there. Instead, what they get sometimes, unfortunately more than sometimes, is all kinds and all forms of abuse. Going right up to the physical sometimes, but certainly a great deal of abuse which is verbal, which is emotional, which is just neglect. And therefore, they're not even seen, they're invisible, they're completely neglected. You don't treat them that they're there except when they're required to help in some way or the other. And this has become a very serious problem, ever more so as we see, with families changing lifestyles, changing societal norms. It's not a new problem, let me stress that. It's been there long, and it's been hidden for very long. But I fear that it's not getting better. If anything, it might be getting worse. You hear much of the kind of problems in the report today which will be presented. It tells us some of what we already know in hard figures, data and facts, and the need to do something about it at all levels. Right from the need for financial independence, where the government needs to step in, center and states. They're niggardly in what they give. There were a lot of schemes for a lot of things, but the elders who built this country, who built their families, who have contributed to so much to society, get something that may not be a fair day's pay as a monthly pension. And this, I think, needs correction desperately, immediately, and has to be acted on. Elders today constitute a fair majority. Their voice, like the invisibility you see, is not very often heard. And one of the things that Helpage tries to do is not just help the elders, but to speak and give voice to their feelings, their needs, their emotions, and try to organize this and take it to advocacy levels, at all levels, starting right from the district level to the state to the center,
and say these are the kinds of problems, the issues that need to be handled. But it's not just the government. I think there are responsibilities on society, on families, which are very important. And as I said, I started with saying what happens within the family, and that needs care, concern, and a great deal of exposure, because a lot of this comes and can be reduced, if not stopped, if it's out in the open. Today it's hidden away, and therefore the question of invisibility that we spoke about needs to be out there. We are yet at the stage of awareness, which sometimes I think about and say somewhat depressing. We yet to build the awareness, we will on then acting on it, which is the next stage. But unfortunately, even awareness is low, and therefore this attempt to bring this up as an issue, to surface it, to speak about it, to discuss it, and hopefully to try and find solutions, to try and make people more aware. And I think rightly, therefore, we've called this My Be Home, to bring visibility to the elder women and to the kind of problems, suffering, and abuse she often faces. I think we will bring out a lot of this to the report. We'll take it and take it forward in terms of the advocacy we need to do with all authorities. But again, it's something that needs to be also internalized within families. I'm looking forward to a great day, presentations, discussions, which will really take us forward in terms of suggesting pathways and how we might do something. So I look forward to a day of really good discussions and go back with something substantial. I want to thank all our panelists for taking the time to come and share thoughts with us and help us, guide us in the way forward. And I want to thank each one of you for coming here to show your support to this cause. It's a cause that each one of us needs to take forward in our own homes, first of all, but then also with our friends, family, relatives, and the society at large. You'll hear more of this as we go ahead, but I want to thank you all once more for being here and for supporting helpage in what we try and do for the elders amongst you. Thank you. Thank you so much, Mr. Karnik. I would now request the opening address to be done by Ms. Rumjum Chatterjee, Vice Chairperson for Helpage India. Rumjum. Good morning, namaste. As Rohit has already mentioned, we are gathered here to commemorate a very significant day, World Elder Abuse Awareness Day. And as per the United Nations, June 15th every year will be a day that highlights the abuse and ageism challenges the elderly confront at the family, society, and systemic levels. As I reflected on the significance of this special day, a lot of points crossed my mind, and that's what I wanted to share today. If the UN has titled this day as the World Elder Abuse Awareness Day, the phenomenon of elder abuse is definitely a global issue. And as our recent study findings reveal, India is not untouched. Elder abuse, as per the definition, is prevalent in India and rising, perhaps not well understood or realized or kept under wraps. And that is the reason why the awareness of such abuse needs to be heightened, highlighted, and reminded to each one of us. So June 15th is a day that we all mark on our calendar, not for us to sensitize ourselves just on that day, but to refrain from the practice every day, so that the following year, when we meet on June 15th, we must meet to consciously evaluate whether in the year gone by we have done our bit to remove some of the challenges from the lives of the elderly, so that they can spend the autumn years of their lives in joy, comfort, and greater ease. And for this to happen, we must all play a part.
India is a nation, I can proudly say, where the tradition, the parampara, the values, the sanskar that we are indoctrinated with in our upbringing has been to respect elders. Yet, the social change that is taking place around us, the breakdown of the joint family system, increasing emergence of nuclear families, increased incidence of working family members being located in different cities or different countries, this leaves the elders vulnerable to neglect, isolation, marginalization, and seclusion. And amongst the elder population, as you have already heard, it is the women who face greater challenges because they live longer, often outliving their husbands, have little or no decision-making powers, and have largely remained financially dependent on the male earning members of the family. Widowhood, too, casts a shadow of societal stigma that pushes them further into marginalization and exclusion. And it is for this reason that the research report that HelpAge India will be launching in a few minutes from now has focused on the challenges faced by elderly women. The findings are very stark, but has given us the opportunity to reflect on how the HelpAge programs are serving the elder women in the communities that we work in, and what more and what specifically needs to be done. The vulnerability of women and elderly women is not difficult to understand. Eternal caregivers for 3 generations, their own, their children, then their grandchildren, and selfless service, often sacrificing their own well-being and needs, including health. Completely economically dependent on male family members because it was always told to them, a woman's place is in the home. No savings to fall back upon. Often not literate or at least not aware of the legal entitlements. And increasingly hardly digitally literate. If you close your eyes and think of the elder women in your family, I'm sure it would be a fitting description of your grandmother and to some extent even your mother. From my vantage point and as a senior citizen myself, I do see a generational shift that is slowly taking place. I too am a grandmother now, and I can clearly see the differences between me and my grandmother. But grandmothers and mothers continue to be a part of the family and must be recognized for who they are and the role that they have played in our lives. It is not to say that elder women, if given the opportunity, cannot become financially independent. HelpAge's livelihood program clearly demonstrates that 66% of the members of our elder self-help groups are women, and that their track record of undertaking income-generating activities is extremely encouraging. We are also finding that when our mobile health units are reaching the communities in far-flung places, elder women are coming forward, they are being served, which they would not voluntarily undertake, and their health-seeking behavior is on the rise. But social inclusion? The Ministry of Social Justice and Empowerment, the Government of India, has introduced the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act in the year 2007. I hesitate to say that in all these years, the protection and empowerment of the elders that was intended to be offered by this piece of legislation is hardly doing its job. Awareness is abysmally low among stakeholders, all stakeholders, and therefore implementation or even its impact is practically non-existent. Like that, there are several good policies and programs in place. There is research and training too,
but there are also huge gaps. The to-do list of what needs to happen to those programs and policies is endless. And social change is fast enveloping us, what with global influences and advancement in technology. But let's turn to another dimension of change. Diversity, equity, and inclusion, DEI, are topics that have been engaging every policymaker, institution, and corporate boards over the last 5 years. You would have also heard repeated discussions of demographic dividend that India has great advantage of, and the narrative around our youth. But in our nation, where a little over 10% of the population consists of the elderly, and about 52% of that 10% are older women, should we not be rightfully placing our elderly women in the inclusion agenda? Diversity, as it gets discussed, is always about class, caste, gender, and disability. But gender and women's empowerment has been on the world's agenda since 1975, the year that the UN declared it to be the International Year of the Woman. But we do not seem to include the elder women in our deliberations. So inclusion is a topic squarely on the discussion table now, and I'm very clear that even in the G20 summit, inclusion is a big and important topic. And therefore, here is an opportunity, and the time is ripe for us to place elders in the inclusion agenda. And given the greater vulnerability of older women, we have to find ways to leverage the power of older women and bring them center stage, so that they are recognized to be the contributors to society, economically integrated, and their years of experience, wisdom, caregiving, and nurturing abilities put to good use, creating employment opportunities, even if they are part-time opportunities, to leverage their strengths in, say, rehabilitation centers, care homes, creches, or even educational institutions as storytellers, value educators, and mentors are possibilities that we need to tap. It is often said that youth is wasted on the young. At least today, let us not waste age on the aged. As someone very wise said somewhere, it's not age, it's mileage. And therefore, we must accelerate our efforts to ensure that we leave no elder woman behind. Thank you. Thank you, Rumjum. I think the line that I will take away today is not age, but mileage. I mean, in one line, I think you put it all together. I would like to now invite on stage Ms. Urvashi Prasad, Policy Specialist and Director, Office of Vice Chairman, Niti Aayog. Ms. Prasad, over to you. Thank you very much for inviting me for this event. It's really a privilege and honor to be here while we are discussing such a very important issue. And I must say that it's something which is very close to my heart, something which I am very passionate about because it involves many dimensions which are very important from a public health perspective as well, and I am a public health professional by training. The gender dimension here that we're talking about is such an important part
and of course aging, which is the other aspect that we're talking about here. So I think a lot of the important challenges, even opportunities have been highlighted by the speakers before me. But I just wanted to speak a little bit from the policy point of view, what we need to do, what we are trying to do, and where organizations like HelpAge in particular can really be of support and value to the government's efforts. So I think very firstly at the outset I would say that in the policy space now there is increasingly a very clear acknowledgement that yes, while we talk about our demographic dividend, yes, while we are still a very young population and for some years to come we will have the opportunity to reap the benefits of that. There is also a transition which is happening in our population. Our fertility rates have nearly stabilized, they have nearly reached replacement levels at the national level, and in fact in the southern states they are very much below the replacement levels, which means that aging in our country is definitely something which is happening, which is a reality, and which is happening at a fairly rapid pace. Of course, it's different in certain states, but overall, if we see, it's a very, very real phenomenon now. And I think there is definitely, because I work in the policy space, I can say that now there is an increasing acknowledgement of this, which I think is very good and very encouraging and very important. So I think that is the very first sort of major point that I really wanted to highlight here. The other point which we are now trying to focus on very strongly is data and evidence, and this is exactly where an organization like HelpAge and the kind of research that has been done and the report that is going to be released today plays a very important role, because what data does, it makes the invisible visible. And that is what it does. It allows us to engage with policymakers at the highest levels, with decision makers at the highest levels, and say, look, these are real issues, which are facing the population. So that is what takes us from invisible to visible, and we need this disaggregated data. We need data not just on aging, but with this gender dimension brought in and highlighted, the many aspects of women and aging that we have spoken about today. If we can show those in very concrete terms to decision makers, to policy makers, it really helps to build our case as to why this is something which needs a very, very focused approach. So that is really the second part where I would, urge HelpAge and any other organization which is working in this space to really engage with the government, engage with policy think tanks. I work at the Niti Aayog and we are, very, very happy to engage on this subject. So that is something I would say, because that will take us away from the invisibility of the issue. The third piece that I would really highlight is on health and women's health in general tends to be often a somewhat neglected issue across age groups. Women also traditionally, culturally, socially, the way it is ingrained in our mindset, we always put our health on the back burner, we put ourselves on the back burner. So that is of course a societal issue also that we need to address. Just like the movie showed that, yes, I'm a mother, I'm a sister, I'm a grandmother, but I'm also an individual, and I have my own needs and my own aspirations and my own desires. So that is something which is a societal dimension, which of course, the government alone cannot address. But civil society there, has a very important role to play. Communication
has a very important role to play there, especially with young people. So that is, of course, a different issue. But when it comes to women's health, there are serious issues, especially on chronic health conditions. And that is, again, something that we are very focused on when it comes to non-communicable diseases, whether it is cancer, whether it's diabetes, whether it's heart disease. And of course, all these issues become even more common, when we talk of elderly women. So there's a further challenge there. So I think these are issues that we really need to focus on. And we are trying to focus on these through the health and wellness centers that the government is actually setting up under the Ayushman Bharat program. A very important component that we are trying to incorporate into the functioning of those centers is primary health care focused on the elderly. And including women's issues, including women's chronic health issues. That is a very important dimension. So the implementation, there's still a lot of variability in implementation across states, but I can say that this is a very important policy focus for us, that we want to make sure that elderly women get this care at an early stage, at the primary health level, rather than having to, reach a hospital or, reach a situation where their condition is already very advanced. So that is another dimension that, I really wanted to highlight from the policy point of view. Then from the, when we look at it from the economic side, and has been rightly mentioned, it's not all about challenges. There are actually opportunities. Of how, what we call the silver economy now, how we can actually, engage women, elderly women meaningfully, and there is so much that they can contribute to the economy. So how do we do that, and how do we create opportunities for that? What are the good practices and models? If we know of, any good work happening by state governments or by civil society organizations, we would be very happy to, talk about those models. We would be very happy to help replicate it across India, to scale it up. So that is, I think, also a very important opportunity. We should not restrict ourselves to the challenges, but we should also look at it as an opportunity. The care economy is another very, very important one, not just from the point of view of elder care, but also, the fact that that's, of course, a lot of women who are a part of the care economy, and this is, obviously women of all ages, but there is a huge gender dimension, in the care economy, and in India, we have really not tapped into its potential. Across the world, if you see, the care economy is really becoming very strong, especially in a lot of the developed countries. There's a lot of focus on this. So we need policy focus to come on this, and this is certainly something which is on our radar. And therefore I wanted to highlight that from an economic opportunity point of view. The other thing that we are really looking at now is a comprehensive approach, because like we have spoken, there are economic dimensions, there are social dimensions, there are health dimensions, and the speakers before me have highlighted that we have sometimes had a piecemeal approach. There's been one legislation here, one scheme here, one policy here, but we are really trying to think of an integrated approach. That is something that we are really now focused on, that how do we integrate the health, social, economic, all these dimensions, and really come up with a policy approach which is very, very relevant for the situation that we are facing today with respect to elders and including, women elders. So that is something which, is a shift which is happening. And again, we need a lot of support from organizations like HelpAge, from other civil society, to help us make that shift in the policy arena. So that is really the other aspect that I wanted to highlight here. And in the end, I would just say that, this is something which, yes, it feels very invisible right now,
But just being somebody in the policy space, I can say that that is changing. There is hope, and we are raising these issues at multiple levels. We are advocating for it within the system, but we need all the data. We need all the evidence. I was flipping through the research findings of the HelpAge report, and I don't want to give away their findings before they talk about them. But I'll just, one point struck me because I'm looking at it from a government policy lens, that, how little awareness we have, right? And they have given all the data on that, here you have these schemes, but actually the women are not aware. They have given all the statistics on that. That's very important for us. That is very useful data for us, because we can go to a state government, we can go to, somebody at the district level. We work in aspirational districts across the country. We can go there and we can say to the district magistrate that, look, you are running this scheme, but the women are not aware. You need to do something about this. You need to raise awareness levels. You need to help women connect with at least whatever you have, help them at least avail that. So I would say there were so many important data points that I could find in this report that I, as someone working in policy, could immediately action. I feel we need more of this. We need more of this research. We need to talk about it more. We need to publicize it. We need to put it out in the media, because that is the only way that we can really advocate. We can get this conversation going. So that would be my sort of parting thought and also request. And once again, it's really wonderful to be here. Everybody here is, I think, far more senior and experienced than me. So I am really full of gratitude that I have had the opportunity to be here and to express myself. And really, it's wonderful that you are marking this day. And I wish you all the best for the deliberations in the rest of the day. Thank you so much. I would now request HelpAge CEO, Mr. Rohit Prasad, to facilitate Ms. Urvashi Prasad for being here with us today. Before we share the findings of the report, the reason why is HelpAge India here today, I think that's something that I would like to share with all of you, all of us from HelpAge would like to share. We have a small film which shows why is HelpAge India here. It talks about the work we do, and we're just waiting for the screen to come down.
तुझसे मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले। That was a small clip of the work we do. जो काम हम 40 साल से ऊपर कर रहे हैं आपके सामने था. बहुत मेहनत हेल्पेज के जो लोग चारों तरफ इंडिया में बैठे हुए हैं, गाँव में काम कर रहे हैं, ये एक छोटी सी झलक है उस काम की. मैं अब रिक्वेस्ट करूँगी, जिसलिए हम लोग आज सब आए हैं, अपनी कोलीग मिस अनुपमा दत्ता, हेड पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी, ऊपर आए और आज की जो रिपोर्ट है, उनकी जो फाइंडिंग्स है, हम सबके साथ शेयर करें. अनुपमा, ओवर टू यू. थैंक यू सोनाली फॉर मेकिंग मी फील सो इम्पॉर्टेंट. आज मुझे सेंटर स्टेज फील हो गया बड़ा सारा. थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म थी जो आपने अभी देखी हेल्पेज के काम के बारे में. एंड आप में से बहुत से लोग हमें जानते भी हैं, पर्सनली भी जानते हैं और हमारा काम भी जानते हैं. बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन अगर बच्चे होते तो बहुत सारे बोलते कि हमने आपके लिए स्कूल में कलेक्शन भी किया है. यू नो दैट कनेक्ट इज़ विद हेल्पेज. सो गुड टू बी हियर. बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे आज. पर उससे पहले मुझे जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनसे एक सवाल पूछना है कि आप में से कितने लोग सोचते हो कि आप सशक्त हो? आप डबल सशक्त हो. वेरी गुड. धीरे धीरे हाथ ऊपर जा रहा है. अगर मैं ये सवाल मेन से पूछूं तो सडनली हाथ ऊपर चला जाएगा, एकदम से हाथ ऊपर जाएगा, स्पॉन्टेनियसली चला जाएगा, बिना किसी सोच के. सोचना नहीं पड़ेगा दिमाग में कि सशक्त मतलब मैं हूँ या नहीं हूँ. कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता. तो ये हमारी एक सोसाइटी का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है. हम सही या गलत नहीं कह रहे उसको. और जब हमने ये सोचा कि हमें रिसर्च करना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, तो बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस थे. बहुत सारे लोगों ने सोचा कि नहीं, हम तो जेंडर न्यूट्रल हैं, हम तो एजिंग पे काम करते हैं, उसमें चाहे वो पुरुष हो महिला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट वी स्टिल थॉट कि लुकिंग एट द डेमोग्राफिक्स, लुकिंग एट मैनी अदर फैक्ट्स, लुकिंग एट द लिव्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि हम जाके, जैसे आपने देखा कि जाके ज़मीनी सिचुएशंस में हम काम करते हैं, तो हमने सोचा कि अच्छा रहेगा कि हम अगर ये बात वहीं से जाके उन महिलाओं से पूछें कि आपकी लाइफ कैसी रही, आपकी लाइफ में अब क्या चैलेंजेस हैं, पहले क्या थे, क्या कुछ इम्प्रूव हुआ. हम इतने सारा एफर्ट करते हैं, सरकार इतनी सारी पॉलिसी बनाती है, इतने सारे लॉज बनाती है, एफर्ट करती रहती है अपने तरह से कि हम सब जो सिटीजन्स हैं उनका कुछ वेलफेयर हो. सो वी थॉट दैट विल गो. और हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से कंसल्ट किया बिफोर वी एक्चुअली गॉट डाउन टू डूइंग द रिसर्च. रिसर्च पार्टनर्स मेरे यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे. उसमें उन्होंने ये बोला कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उनकी एजड 60+ के बाद की लाइफ के बारे में ज़रूर जानो, लेकिन आप महिलाओं से ये भी पूछो कि उनका लाइफ कोर्स क्या था और उस लाइफ कोर्स में जो चैलेंजेस उन्होंने तब फेस किए, उसका अब उनके जीवन पे क्या असर पड़ा भी या नहीं पड़ा. हमारे सीईओ ने कहा कि हम ओपन माइंड से गए वहाँ पे, हमें नहीं पता था, हम किसी अजम्पशन से नहीं गए. हमने ये अजम्पशन नहीं किया कि महिलाएं हैं तो ज़रूर दलित दबे कुचले होंगे, ज़रूरी नहीं है. हो सकता है बहुत एम्पावर्ड वुमेन भी हो. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्पावर्ड वुमेन हैं. मैन आई थिंक फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद देम एट टाइम्स. घरों में भी ऐसे महिलाएं, सब कैरेक्टर जो लिटरेचर पढ़ते होंगे, वो अगर बंगाली लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहाँ वुमेन कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हमने सोचा कि देखिए रियलिटी सच में कैसी दिखती है. और बहुत सारी जगह हम खुद भी सरप्राइज हो गए. जैसे हमने सोचा कि रूरल अर्बन में बहुत डिफरेंस हमें नज़र आएगा, लेकिन हमने ये पाया कि क्लास वॉज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आप किस समाज, किस तबके से आते हैं, आप कैटेगरी ए, बी या सी से आते हैं, आप चाहे रूरल में रहें, अर्बन में रहें, विमेन की कंडीशन काफ़ी हद तक सिमिलर थी, विच वॉज एन आई ओपनर फॉर अस एज वेल.
So many new things have come up, so we'll discuss about it, and अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर बाद में हम उस पर भी चर्चा करेंगे. So if somebody can just play it from. हमने ज़्यादातर हंसते हुए फेसेस रखे हैं यहाँ पे. हम चाहते हैं, ये एस्पिरेशन है कि महिलाएं हमेशा खुश रहें. सो ये ब्रॉडली हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है. जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स हम, क्योंकि हम थोड़े एम्बिशियस हो गए कि हमने सोचा कि सब कुछ डील करते हैं कि क्या क्या होता है. तो वी लुक्ड एट देयर करंट स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी. हेल्थ और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी लाइफ के, और विमेन के लिए पर्टिकुलरली. और इकोनॉमिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हेल्थ कनेक्टेड होता है उससे. अब जब हेल्थ में हम जाते हैं तो विमेन हेल्थ व्हेन दे आर इन द रिप्रोडक्टिव एज, lot of support is given by the government, lot of support is given by families also. When a woman is in a childbearing age, she gets a lot of support, but ये support धीरे धीरे खिंचती जाती है. Physical environment हमारा बहुत ही it's a very nimble thing. हम लड़की को घर से बाहर जाने नहीं देते. रूरल एरियाज में स्कूल की एजुकेशन 5वीं के बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि स्कूल गांव में नहीं होता, कहीं बाहर होता है. लड़की को नहीं जा सकती वहाँ, बिकॉज शी इज़ नॉट सेफ. कोई वहाँ पे क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी का एक चैलेंज रहता है हमेशा. सो हाउ दैट इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ दैट गर्ल व्हेन शी ग्रोज अप. डिजिटल एंड सोशल इंक्लूजन. डिजिटल तो नई चीज़ है, हम सब जानते हैं कि आफ्टर कोविड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. उससे पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा है. बट सोशल इंक्लूजन आप देखेंगे, सबने स्पीकर्स ने भी कहा, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि विमेन आर केयर गिवर्स. उनको हम माँ की तरह ही देखते हैं, नर्चरिंग रोल में हमेशा देखते हैं. तो नर्चरिंग रोल में अगर देखते हैं तो वो रोल क्या है, उसमें वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है. क्या वो वन साइडेड है, क्या वो टू वे है, क्या जैसे हमारे सीओ साहब ने कहा कि आप समझ लेना खुद ही, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप समझ लेना मुझे आपकी परवाह है. सो दैट काइंड ऑफ नुआंस वी वर लुकिंग एट. ऑफ कोर्स इम्पैक्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, लाइक जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि हमने बहुत ही सारी सीनियर एकेडमिशियन से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जेंडर के लेंस से देख रहे हैं तो आप वल्नरेबिलिटी ज़रूर देखिए. कि जैसे अगर हम लासी में भी देखेंगे कि वेमेन का जो भी मापदंड रहता है एजुकेशन में, एक्सेस में, सोशल एसोसिएशंस में जाने में, वो बहुत हमेशा 2 से 3 गुना कम रहता है मर्दों के मुकाबले में. तो व्हाट आर दोज अक्यूमुलेटेड हैंडीकैप्स दैट दे हैव अक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स. कम पढ़ी लिखी हैं, कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम एक्सेस है, कम इन्फॉर्मेशन है. ज़्यादातर लोगों, अगर घर में कोई बोले कि मुझे सेल फोन, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, हाउ मेनी हाउसवाइफ्स विल गेट अ लैपटॉप ओवर द अदर फैमिली मेम्बर्स. सवाल सबसे पहला होगा, आप क्या करोगे उसका. क्यों चाहिए आपको सेल फोन, क्यों फैंसी सेल फोन चाहिए, क्यों. आप बच्चे से नहीं पूछोगे कभी भी, लेकिन वुमेन से ज़रूर पूछोगे. सो दोज एंड हाउ इट इम्पैक्टेड देयर ओल्ड एज. फिर ऑफ कोर्स लाइक एल्डर अब्यूज़, हम क्योंकि एल्डर अब्यूज़ के बारे में तो ये बात ही थी, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ एनीवे वी ऑल अंडरस्टैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वायलेंस सिर्फ ओल्ड एज में नहीं आती, वायलेंस तो फीटल स्टेज से आ रही है लाइफ में. अगर आप सेक्स रेशो देखेंगे 0 to 6 वाला, एट वन पॉइंट इन टाइम इंडिया में बहुत बड़ी समस्या थी. वो 926 से भी नीचे वो चला गया. अमीनोसेंटेसिस के लिए सरकार को बहुत सीरियस कदम उठाने पड़े. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. देन अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन, जस्ट लाइक आई सेड, लॉ है, मैकेनिज्म है, लेकिन कितना कारगर है. अगर वो लॉ हो और मेरे लिए किसी काम का ना हो तो मुझे उसका क्या फ़ायदा. देन ऑफ कोर्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम. जैसे मैंने कहा कि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाई है वेमेन के लिए, लॉ बनाया है फॉर एल्डरली वेमेन, तो उनका क्या ग्राउंड पे क्या असर है, क्योंकि जब तक ग्राउंड पे असर नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है. और इसमें आई वुड लाइक टू मेंशन है कि आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि सरकार ने कोशिश की 2019 में उस लॉ को अमेंड करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, लेकिन सैडली वो लॉ आज तक भी पेंडिंग है. वो पार्लियामेंट में वो पास नहीं हुआ. और एक बार मैं और मेरी कॉलीग ऋतु, वी वर आस्क्ड टू डिपोज इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी, और हमें बहुत सरप्राइज हुआ ये जान के कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनको उस लॉ के बारे में पता भी नहीं था. सो अगर उस लेवल पे लोगों को नहीं पता है तो हम क्या सोचें कि ज़मीन वाले महिला को क्या पता होगा. सो दोज वर समथिंग्स दैट वी थॉट वी शुड लुक एट मोर सीरियसली. अब ये हमने क्योंकि सोचा कि अगर हम इतनी सीरियस बात के तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा एक लैंडस्केप बहुत बड़ा होना चाहिए, और तो इसलिए हमने उसको अर्बन, रूरल और पूरे देश में, एक तरह से हमने पूरे देश की स्थिति जानने की कोशिश की, उसकी नब्ज़ पकड़ने की कोशिश की. नेक्स्ट. और ये कुछ सर्वे हाइलाइट्स हैं.
पर मैं आपको ये यहाँ नहीं बताऊँगी, मैं आपको ये साथ साथ में बताते जाऊँगी। ये कुछ ब्रॉडली, आई विल नॉट गो टू मच इनटू मेथोडोलॉजी क्योंकि वो टेक्निकल बात है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिन महिलाओं से हमने बात की उनका ये डेमोग्राफिक ये था कि आप देखेंगे ज़्यादातर महिलाएं जो थी वो 60 से 79 ईयर्स की एज में थी, मोस्टली वुमेन। एंड आप देखिए लिविंग विद स्पाउस एंड लिविंग विद फैमिली एंड लिविंग अलोन। तो लिविंग अलोन, बहुत सारी वुमेन अलोन भी रहती है यहाँ पे, विच इज़ अबाउट फेयरली गुड परसेंटेज। तो उनकी जीवन कैसी है, फैमिली के साथ तो मेजॉरिटी रहते हैं, उनके लाइफ कैसी है, फैमिली के साथ रहना और उससे अलग रहना क्या है, फैमिली अलग रहे लेकिन उसका क्या रिलेशनशिप है एल्डरली के साथ, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एसेट ओनरशिप, जब हमने पूछा उनसे कि आपके नाम पे कोई एसेट है, तो ये मेजॉरिटी तो नो ही है। माइनॉरिटी जो 34% है उसका ब्रेकअप आप देखिए, आखिरी में जो आपको ग्रीन एक लाइट दिख रही है, हाउस। जो घर है वो 88% वुमन के नाम पे रजिस्टर्ड था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों रजिस्टर्ड था, कैन एनीवन टेल मी? थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग। जी 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 जी। तो ये बस आपने मेरा काम आसान कर दिया, थैंक यू सो मच। तो अब आप समझ गई, आपके नाम पे मकान है, जब चाहें इनसे बाहर जाने को कह सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जी नहीं, वो एक ऐसे ही मैंने ऐसे ही बोल दिया, नॉट सीरियसली। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नाउ वी आर लुकिंग एट, लाइक आई सेड, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने पैसे आपके पास हैं, ऑल सेड एंड डन, फैमिलीज अच्छी हैं, आपका देखभाल कर रही हैं, लेकिन आपके पास एम्प्लॉयमेंट के क्योंकि आप पढ़े लिखे कितने हैं उसी हिसाब से आपकी अर्निंग एबिलिटी है, या आपको हाउस वाइफ बना के रखा गया, आपको पैसे नहीं दिए गए। नेवर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में 51% विमेन थी, और एवर एम्प्लॉयमेंट में 13% जो करंटली एम्प्लॉयड है, मतलब ओल्ड एज में भी 13% महिलाएं जो जिनसे हमने बात की वो काम कर रही थी। तो ऐसे महिलाएं भी हैं जो काम करती हैं ओवर द एज ऑफ 60। ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, वो काम करने की बात है, उसमें हमने क्वालिटी अभी भी चेक नहीं की कि वो कितनी स्किल्ड हैं, वो क्या काम कर रही हैं, वो उनका काम मैच करता है स्किल के साथ, नहीं करता, वो हमने चेक नहीं किया, बट दैट इज़ द ब्रॉड फिगर। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मैं बार बार एम्फेसाइज करूँगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही डिसाइड करती है कि मेरा लाइफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और कोई बाहर क्यों है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको गेट के बाहर ही रखा गया। So that's very important. So for us it's a very important thing. Like, what do they think about opportunities available to them? And if you look at it, 70% are saying that opportunities were very limited. ये सबसे पहली चैलेंज है जो महिला की जिंदगी में आती है, और इसके बाद क्या रिपरकशंस आते हैं, I'll keep telling you. ये सजेशंस हैं उनके। और एक बात जो मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ कि हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि जब हमने उनकी एस्पिरेशंस पूछी, डिस्पाइट ऑल द लाइफ चैलेंजेस दैट दे हैव फेस्ड, उन्होंने एस्पिरेशन बताने में कभी कोई कमी नहीं की। देयर एस्पिरेशंस वर एज हाई एज इट कुड बी। So it's a very, very positive for us that even at that age of 60, 69, they still thought that they have potential and they can do much. So opportunities become even more important for us in that context. That if they had the opportunity, or they are given the opportunity. So that is why we keep telling about enabling environment, which is very important. Then पीछे चले जाइए, हाँ यहाँ पे नहीं, इसके पीछे, हाँ। एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट हमने पूछा कि अगर आप नौकरी करना चाहें तो घर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। इनेबलिंग होता है कि आपको कहते हैं कि नहीं नहीं क्यों काम करना है, तो ये उसमें, और जो लोग काम करते थे उनका जो वर्क एनवायरनमेंट था, तो आप देखेंगे तो बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली एज़ कम्पेयर टू द घर का एनवायरनमेंट, क्योंकि वो जो केयर वाला एस्पेक्ट है ना, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सोचो आप कितना क्रूशल रोल प्ले कर रहे हो वहाँ पे, लेकिन उसको कितना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है हमेशा। तो ये मेरे हिसाब से ये वो दिखाता है कि इकोनॉमिक्स घर में और बाहर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, देन ये हमने बोला कि आप बताइए कि क्या व्हाट आर द इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबल आवर्स अगर हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, अगर लोग सपोर्टिव हों तो हमारे लिए अच्छा रहेगा,
दे एडजस्ट देयर वर्क प्लेसेस, अगर उन्होंने अपने वर्क प्लेस को हमारे लिए एडजस्ट किया. वेलनेस प्रोग्राम्स फॉर एल्डरली, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपके पास एल्डरली एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनको काम दिया, तो आप उनके वेलबींग को कैसे बेटर करेंगे? Do you treat them at par with other employees? Do you consider them as specifically targeted population? And कैसे उनको डील करेंगे? देन ये इकोनॉमिक, ये हमने उनसे पूछा कि फाइनेंशियली आप सिक्योर फील करते हैं कि नहीं, तो 47% सेड यस. और रीजंस फॉर फीलिंग सिक्योर में सबसे लास्ट वाली बार आप देखिए नीचे, माई चिल्ड्रन सपोर्ट मी. तो बहुत अच्छा इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है, और क्योंकि ये क्लास कॉन्टेक्स्ट है, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फैमिली यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना रोल प्ले कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है, महिला को फील भी हो रहा है कि हाँ मेरी सिक्योरिटी है, लेकिन इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उसकी. यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट वापस चले जाइए. आई हैव गुड सेविंग्स, ये सिर्फ 6% ने कहा. आप देखिए इंडिपेंडेंस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बहुत साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी इंडिपेंडेंस, और आप सोचोगे कि हर लाइफ इज़ वेरी गुड, फैमिली सपोर्टिंग, व्हाट इज़ द नीड, व्हाई शुड शी अननेसेसरली गो आउट एंड वर्क. बट वो सेम हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इज शी एन इंडिविजुअल और इज शी जस्ट अ वाइफ एंड अ मदर एंड ऑल दैट. फिर हेल्थ एंड वेलनेस पे अगर आप देखेंगे तो 45% रिपोर्टेड क्रॉनिक कंडीशंस. इसमें से आप देखिए तो 8 और 7% वाले जो लोग हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 या 4 से ज़्यादा भी क्रॉनिक कंडीशंस हैं. नाउ क्रॉनिक कंडीशंस, आई होप यू ऑल नो, इज़ एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, क्योंकि उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, आपको ट्रीटमेंट कराते रहना पड़ता है, और इलाज के लिए कंसल्टेशन और पैथोलॉजिकल टेस्ट विच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है विमेन के लिए. और बहुत सारे केसेस में हमने देखा, एनेक्डोटल एविडेंस हमने देखा कि वो अपना इलाज कंटिन्यूस नहीं कराते. अगर आपका ये साइकिल है कि आपको डायबिटीज़ का टेस्ट हर 3 महीने कराना है, तो नहीं करा पाते, क्योंकि पैसे नहीं हैं, क्योंकि इस बार कुछ और काम ज़रूरी है फैमिली के लिए. कोई मैंने ये भी देखा कि दवाई भी कंटिन्यूस नहीं खाते, क्योंकि दोबारा दवाई खरीदने के पैसे कभी कभी नहीं होते. सो व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन देयर हेल्थ वी रियली डोंट नो. इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट बात थी, पीछे चले, आगे चले जाइए. हाँ, देयर इज, आई एनीवे से दिस. हमने जब ये पूछा कि आप एक्सेस कहाँ अगर आपको एनसीडी है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ जाते हो, तो 41% ने कहा कि हम कभी पब्लिक जाते हैं, कभी प्राइवेट फैसिलिटी में भी जाते हैं. लेकिन 36% ने कहा कि हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सिर्फ पब्लिक फैसिलिटी में ही जाते हैं. और आप में से कितने लोग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में कभी गए हैं आज तक? प्लीज़ हाथ खड़े करिए. पब्लिक मतलब जो सरकारी अस्पताल होता है. तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि सरकारी अस्पताल में कितना चैलेंज होता है. और आप लोग दिल्ली में रहते हो, अगर मैं दूर दराज की बात करूं, अभी उर्वशी जी ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर, वो डिस्पेंसरी की एवरेज डिस्टेंस क्या होगी मेरे घर से? अगर 3-4 किलोमीटर भी है और वहाँ पे कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो मैं कैसे वहाँ जाऊँगी, ये एनीबडीज़ गेस है. और कितने बार मैं जाऊँगी, ये एनीबडीज़ गेस है. अगर उससे ज़्यादा दूर है, बस में जाना पड़ता है, मोर चैलेंजिंग, आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर. तो इम्पॉर्टेंट है कि हम, हाँ, वो एक बार में अवेलेबल नहीं होता, फिर दोबारा जाना पड़ता है, फ़ोन पे पता भी नहीं चलता. दिल्ली में तो CGHS में वो फ़ोन में बता देते हैं आपको. नेक्स्ट, ये वही जो मैंने आपसे बात की अभी. और इसमें अगर हम एस्पिरेशंस देखेंगे तो वो उसी से कनेक्टेड है कि दे वांट इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ नियर बाय 50%. देन इंक्रीज सपोर्ट एंड असिस्टेंस एट होम. ऑफ कोर्स वो डिपेंडेंट है, तो उनको जब तक घर सपोर्ट नहीं करेगा वो कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे. कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर खर्चा किस बात पे होता है? कंसल्टेशन एक बार होती है, लेकिन दवाई पूरे 3 महीने खरीदनी पड़ती है, खानी पड़ती है. अगर 4 कंडीशंस हैं तो 4 इंटू, यू जस्ट हैव टू डू द मैथमेटिक्स. सो दैट दोज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. इसमें देखिए लिमिटेड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन गेटिंग ट्रीटमेंट में हमने जब पूछा तो ट्रांसपोर्ट सबसे ऊपर आया उसमें. फिर हाई कॉस्ट, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा हाई कॉस्ट तो है ही, लैक ऑफ हेल्थ एरिया, इंश्योरेंस भी नहीं है, लेकिन लिमिटेड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी फेयरली गुड नंबर ऑफ पीपल ने कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर ये बेटर हो या फिर मेरी फैसिलिटी मेरे घर के पास हो, तो एक्सेस टू हेल्थ केयर विल इम्प्रूव फॉर वुमेन. बट एक जो अच्छी चीज़ हमने क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लाइफ कोर्स पूछा था, तो लाइफ कोर्स में उन्होंने कहा कि जब हम यंग थे तो हेल्थ फैसिलिटीज़ आज के मुकाबले में थोड़ी कम थी.
अब वो हेल्थ फैसिलिटीज़ तब के मुकाबले इम्प्रूव हुई। सो हेल्थ सिस्टम हैज़ इम्प्रूव, बट हाउ मच इट इज़ एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ एजेड women, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू सी। फिर हम केयर गिविंग रोल पे आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है। अब इसमें से आप देखिए कि केयर गिविंग रोल तो 70% लोग कर ही रहे हैं, और वो आवर्स भी आप देख लीजिए, 27% आर डूइंग मोर देन 5 hours ईच डे। मतलब फेयरली टास्क, फेयरली इंपॉर्टेंट टास्क है उनका, 5 घंटे दिन में केयर गिविंग में जाता है उनका, मतलब वो घर का देखभाल पूरा करना पड़ता है, ठीक है। उसमें अब फिर इधर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो इम्पैक्ट है, इट इम्प्रूव्स माई वेल बींग। 50% ने कहा कि अगर मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ तो मैं बड़े ठीक रहती हूँ, बट क्या उसके पास कोई ऑप्शन है? Is this a forced option or is this a chosen option? That is what is the question here. Improves my well-being to a certain extent, but I feel burdened at times. ये 21% ने कहा। अगर वो burdened हो और फैमिली पे डिपेंडेंट हो तो क्या वो कह पाएंगे अपनी फैमिली से कि नहीं, आज मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे फ्रेंड के साथ बाहर जाना है? कह सकते हो आप में से कोई ऐसे कि आज मैं फ्रेंड के साथ फिल्म देखना है, अपने बच्चे को खुद देखो? ये बहुत कम महिलाएं कह पा रही हैं, ज़्यादातर चुप हैं, कह नहीं रही हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है, महिला कहती नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये जैसे पहले भी बात हुई कि जो बाहर का जो दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग फिजिकली हार्म्ड, जैसे मगिंग या ऐसा कोई फिजिकल हार्म नहीं है, लेकिन गिरने का डर बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड की कंडीशन ख़राब है, उनकी आईसाइट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, सेफ एरियाज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इवन सोसाइटी में या जहाँ पे भी वो रहते हैं। फियर ऑफ फॉलिंग 76%, फियर ऑफ फॉलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बाहर ना जा पाएँ तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एक्सेस सब लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा था, वो बच्ची को हम दूसरे गांव में नहीं भेजते, उसकी पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है इस बात से। So it is something akin to that how it is confining women to home and not enabling them to become independent. Suggested measures आप देख लीजिए, obviously इसका converse है कि they want more access, they want increased support from family of course. Street lighting improve करिए, public transport. I don't think आप में से कोई public transport use करते हैं, लेकिन बहुत से लोग करना चाहेंगे, especially in the lower middle class segment. They want to use जी जी हाँ, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट बिल्ट है। अगर हाँ वो भी नहीं जाऊंगी तो आपका सोशल, अगर आप सोशल एक्सेस लिमिट हो जाएगा और हेल्थ भी। सोशल इंक्लूजन्स, जब हमने सोशल इंक्लूजन के बारे में पूछा कि आप जनरली कैसे लोगों से सोशलाइज करते हैं, तो उन्होंने फ़ोन कॉल और फेस टू फेस मीटिंग, ये सबसे ज़्यादा, ये मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ कनेक्टिंग विद अदर्स है। और अर्बन एरियाज़ में दोनों तरह से यूज़ करते हैं, रूरल में फेस टू फेस ज़्यादा करते हैं, अर्बन कम करते हैं। जो महिलाएं, जो मैंने पहले बताया था कि 10% वो लिविंग अलोन एंड नॉट लिविंग विद फैमिली, उनका जो कनेक्ट है विद फैमिली वो इस तरह से है कि एवरीडे कनेक्ट है 24% का, 30% का सिर्फ वंस अ मंथ है और 20% का एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो टेन्यूस कनेक्ट है विद फैमिली इफ दे आर लिविंग अलोन। नेक्स्ट, ये टाइम स्पेंड विद चिल्ड्रन है। आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से कहाँ चली गई, ये तो ऑफकोर्स ये अगर आप देखेंगे रीजंस फॉर स्पेंडिंग तो बहुत ही जस्टिफिकेशन है। आप देखिए कि बहुत सारी जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि मेरे बच्चे बिजी रहते हैं, उनके पास काम रहता है। बहुत कम से लोग ने कहा कि वो लैक ऑफ विलिंगनेस, वो सिर्फ 33% ने कहा, बाकी सब सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। लेकिन दूसरी साइड में मुझे आई थिंक इट्स नॉट इन दिस स्लाइड बट नेक्स्ट वन, यहाँ सॉरी जस्ट गो बैक टू द लास्ट वन। मीटअप एट पार्क एंड कॉलोनी, जो अर्बन एरियाज में स्पेसेस अवेलेबल, पब्लिक स्पेसेस अवेलेबल फॉर विमेन टू सोशलाइज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप घर में अगर जगह कम है और घर में चैलेंज है तो आप कहाँ जाएंगे किसी और से बात करने के लिए, और वो स्पेसेस अगर नहीं है और वो अगर एल्डरली फ्रेंडली नहीं है तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट, डिजिटल इंक्लूजन, ये तो हमें बहुत ही ऑब्वियसली, हमें ये हमारा अजम्पशन भी था और बहुत ऑब्वियसली ये पता भी चला कि
ज़्यादातर के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, और अगर है भी तो हेजिटेंसी रेट बहुत हाई है, और वो अगर फ़ोन है भी तो वो उसके लिए सिर्फ फ़ोन करने के लिए या फिर लाइट म्यूज़िक सुनने के लिए उसको कभी कभी यूज़ करते हैं. सोशल मीडिया 18%. 59% elderly women are not familiar with social media platforms. सो डिजिटल एक्सक्लूजन, क्योंकि अगर आप छोटे से बच्चे 5 साल वाले को पूछेंगे उसको सब पता रहेगा, फेसबुक, इंस्टा, सब फोटो भी डाल देगा वो खुद से, लेकिन एल्डरली विमेन का बहुत ही कम एक्सेस है उसमें. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स वेरी डिज़ायरेबल, बट इट इज़ समथिंग दैट दे शुड एक्सप्लोर मोर, बट दे आर इनहिबिटेड. और अब जब हमने इनसे पूछा कि आप क्या ऐसे किसी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहेंगे जिसमें आपको डिजिटली कुछ सावी बना दिया जाए, तो सिर्फ 13% विमेन ने हाँ कहा. तो वहाँ पे भी थोड़ी हेजिटेंसी हमें दिखी. अब ये डिसीजन मेकिंग की बात है, जस्ट लाइक आई सेड कि वल्नरेबिलिटीज़ कैसे कैसे प्ले आउट कर रही हैं लाइफ में. तो एल्डरली के लिए तो उसको सेविंग्स, स्टेटस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब तरीके थे जिससे हम ढूंढें कि उनका लाइफ में वल्नरेबिलिटी से कैसे इम्पैक्ट हुआ. एंड हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या पहले जब आप यंग थे तो क्या स्टेटस डिफरेंट था, अब स्टेटस डिफरेंट हुआ. तो उसमें से 66 ने कहा हाँ पॉजिटिवली, एंड 13 ने कहा नेगेटिवली, एंड बाकियों ने कहा कि नो चेंज, जो पहले था वो भी अभी भी वही है. तो स्टेटस इन फैमिली हैज़ चेंज्ड पॉजिटिवली फॉर मेनी women बट नॉट फॉर ऑल. डिसीजन मेकिंग, ये सब आप ये जो लास्ट वाला बार है, अर्लियर एंड नाउ सेम डिसीजन टेकन बाय स्पाउस. 48% ने कहा पहले भी डिसीजन स्पाउस लेते थे, अभी भी वही लेते हैं. तो एज से कुछ खास फ़र्क मुझे पड़ा नहीं, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा. तो उसके बाद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की राइट साइड पे आप एक देख सकते हैं कि जनरली जो वुमेन पहले काम करते भी थे अब उनमें से बहुत कम है जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, मोस्टली अब नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट, सोशल में आप देख सकते हैं विलिंगनेस टू बी इंडिपेंडेंट. अब ये बहुत एस्पिरेशनल है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. 67% ऑफ द women want to be independent. जितने भी फैमिली अच्छी हो, जितना भी देखभाल करती हो, बट दे स्टिल वांट टू बी इंडिपेंडेंट. डिस्क्रिमिनेशन, जब हमने पूछा कि कितने आपने महिला होने के लिए डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, तो वो बहुत ही एक इंटरस्पर्स सा था वो डेटा, कोई बहुत एक तरफ नहीं दिखा रहा था. किसी ने कहा ये कि जनरली इम्प्रूव्स विद रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी कहा. लेकिन आप अगर वो ब्लू ब्लॉक में देखेंगे तो 64% ऑफ द एल्डरली विडोज सेट की डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो पैट्रियार्कल में फैमिली में स्टेटस ऑफ वुमन मैरिज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. अगर विडो, अगर आप जनरली फैमिली वुमन होने के बाद डिस्क्रिमिनेट नहीं भी कर रही है तो विडो होने पर वो चेंज हो जाता है डायनामिक पूरा. So dependence on the male is still very prevalent and very, very embedded in society. I think this of course will go down further in and we'll look at the data. इसमें वही उनका चैलेंज था कि अब रीज़न फॉर वल्नरेबिलिटी दैट अफेक्टेड लोअर इनकम, आप देखो कुड हैव गॉटन बेटर ट्रीटमेंट. लास्ट आप देखिए, और इन्फॉर्मेशन का लैक आप देखिए सब जगह, हेल्थ में भी और दूसरे चीज़ में भी. नेक्स्ट, ये जनरली हमने पूछा कि आप एल्डर अब्यूज़ के बारे में क्या जानते हो, प्रेवलेंट है या नहीं है. तो उसमें से ज़्यादातर ये फॉर्म उन्होंने बताया कि जनरली इसको हम एल्डर अब्यूज़ मानेंगे, और 29% ने कहा आई डोंट नो व्हाट इज़ एल्डर अब्यूज़. तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है एल्डर अब्यूज़ का उनके दिमाग में. तो अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. नेक्स्ट, फिर हमने पूछा कि अब्यूज़र कौन है आपके जनरली. तो वही इसमें हम लास्ट वाली ये सन एंड डॉटर इन लॉ आपको हम हर साल बताते हैं, उसमें सिर्फ परसेंटेज वेरी होती है. लेकिन स्पाउस इज समथिंग दैट हैज़ कम आउट दिस टाइम बिकॉज वी आर टॉकिंग टू विमेन. 17% इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, और 16%, जबकि हम जनरल नेशनल एवरेज देखेंगे तो 10 से 11% आता है. लेकिन अगर विमेन के केस में हमने देखा तो 17% विमेन रिपोर्टेड फेसिंग अब्यूज़ ऑफ सम काइंड. अब जब हमने पूछा कि आप में से यंगर एज में आप में से कोई अगर अब्यूज़ के विक्टिम है, तो 8% ने कहा हाँ, और उसमें
फादर केम आउट एज द मेन परपेट्रेटर, और बाकी रिलेटिव्स भी हैं उसमें, लेकिन वो 39% है, लेकिन वो बहुत सारे कैटेगरी जिसमें विमेन भी हैं, विमेन रिलेटिव्स भी हैं उसमें, बट फादर केम आउट एज वन ऑफ द मेजर परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट यंगर वुमेन। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ अब्यूज़ जो हमने देखा, तो ये एक और स्टार्टलिंग फैक्ट है कि पहले कभी भी हमारे पास फिजिकल वायलेंस इतनी हाई परसेंटेज में नहीं आई थी। हमें हमेशा बोला जाता था कि हाँ, डिसरिस्पेक्ट, नेग्लेक्ट, सो पैसिव फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, बट ये एक्टिव फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़, विच इज़ वेरी वेरी हाई इफ यू लुक एट इट। इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज़ नेक्स्ट 40%। सी, this is something very very specific to women। financial exploitation, neglect भी है 29%, डिसरिस्पेक्ट भी है, लेकिन ये जो बात है फिजिकल वायलेंस की, एक्टिव वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, दिस वायलेंस, ये पहली दफ़ा हमारे सामने आई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब हम उसके रिस्पॉन्सेस देखते हैं, तो उसमें आप जनरली देखिए तो पैसिव रिस्पॉन्स आपको ज़्यादा दिखेगा। आई क्राइड एंड फेल्ट डिप्रेस्ड, चॉइस नहीं है, कैसे बोल सकते हैं। सो शी क्राइज एंड फील्स डिप्रेस्ड, शी एट टाइम्स स्टॉप स्पीकिंग विद देम, वेरी वेरी पैसिव वे ऑफ टेलिंग दैट आई एम एंग्री विद यू, आई डोंट लाइक द बिहेवियर, एक्टिवली बोल भी नहीं पा रहे। बट देर इज अ परसेंटेज ऑफ women who are reporting it to the institutions, which is a very very good sign if you ask me। 16% are reporting to police and institutions, some are taking help of an NGO as well। I complain to family। तो ये एक्टिव फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमें बहुत पॉजिटिव लगे कि ऐसी भी महिलाएं हैं जो इसके बारे में रिपोर्ट भी करती हैं, तो ऐसी सशक्त वाली महिलाएं भी हैं। फिर सजेशंस हमने पूछा कि हाउ टू प्रिवेंट द अकरेंस, तो आप नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो मुझे ये सबसे आउटस्टैंडिंग लगता है, स्ट्रेंथनिंग लॉज एंड पेनल्टीज फॉर एल्डर अब्यूज़। ये पहले हमारे किसी सर्वे में नहीं आया। जब हम मेल एंड फीमेल से बात करते थे तो वो अवेयरनेस, ट्रेनिंग, मतलब सॉफ्टवेयर वाले रिस्पॉन्सेज को ज़्यादा अहमियत मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेंथनिंग लॉज एंड पेनल्टीज। बैरियर्स जो थे, रिटेलिएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेलिएशन के, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो फैमिली में रहते हैं, उन पर डिपेंडेंट है, तो रिटेलिएशन का डर उन्हें हमेशा रहता है, इसलिए रिपोर्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, these are some of the suggestions which we can, I think I've already told you, but ये last वाला जो platforms where elderly can come and speak about it, it's very important। Spaces, the space where elderly can come and talk about their issues is very important in all these things। Next, ये जैसा कि हमने कहा कि हमने पूछा कि अवेयरनेस के बारे में, तो ये बहुत ही लो अवेयरनेस हमें पता चली। 78% आर जनरली नॉट अवेयर, तो 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या क्या स्कीम्स हैं उनके लिए, और जिनको पता है वो टॉप रिकॉल जो थी वो सिर्फ यही थी, वरिष्ठ पेंशन एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिर्फ ये 2 टॉप रिकॉल है। इसका एक्सेस हमें नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं। नेक्स्ट, अवेलिंग जो स्कीम्स हैं वो भी वरिष्ठ पेंशन और नेशनल ओल्ड एज होम पेंशन एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जिनका पता है उन्हीं के बारे में एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉलेज हाउ टू अप्लाई, 82% डोंट नो हाउ टू अप्लाई। अगर पता भी हो कि स्कीम है और नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करना है, तो देयर इज नथिंग दे कैन डू अबाउट इट। नेक्स्ट, ये हमने जो स्पेशल मेंटेनेंस एक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात की आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, मेरे हिसाब से बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। उसके बारे में मेंटेनेंस आप देखिए कि बहुत ही लो है, सिर्फ 15% 16% लोगों को सिर्फ पता है कि वो है। लेकिन गुड पार्ट अबाउट दिस वाज कि जिनको पता है उनको प्रोविजंस भी पता है और उनको ये भी पता है कि कैसे एक्सेस करना है। तो जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत अच्छा काम किया, चाहे सरकार ने दियो या किसने दियो। उसके बाद हमने पूछा कि उनमें से 16% में से कुछ लोगों ने उसको यूज़ भी किया है रियल लाइफ में। तो हमने पूछा कि क्यों यूज़ किया है, तो आप देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, उसके लिए उन्होंने यूज़ भी किया, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत लोगों ने यूज़ किया उसको। सो दिस इज़ हमारा ये जो कंक्लूजन इसमें से ये है कि अगर आप महिला को बताएंगे कि उसके लिए क्या प्रोविज़न है, उसको कैसे एक्सेस करना है, तो महिलाएं आगे बढ़ के उसको यूज़ करती भी हैं। इंक्रीज पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, like I said in previous slide also कि वो they want the law to be toughened and they want law to be toughened to protect them really।
गवर्नमेंट अवेयरनेस स्कीम पे लाइक दे सेड कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड और वो सब उन्होंने बोला. ये कुछ सजेशंस हैं विच आई थिंक आई कैन स्किप. आई थिंक आई स्टॉप हियर एंड so I will yeah. Okay. So क्योंकि आप लोग शायद थोड़े थोड़े मुझे लग रहा है थोड़े नींद भी आने लगे किसी किसी को बीच बीच में. तो though I try to make it as lively as I can, but I think I will now request some experts from the audience to also share their views on the subject. तो सबसे पहले हम जय गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ 5 मिनट बोले. हाँ यहीं से बोल दीजिए. मैं बताना चाहता हूँ मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर. मैं हमारे वाइस चेयरपर्सन हेल्प इंडिया की मैडम किसी की बात सुन रहा था अच्छी तरह से, और उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस एक्ट में प्रोग्रेस बहुत कम है. लेकिन मैडम हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं 2005 से, और दिल्ली में ये एक्ट जो है 2009 में लागू हुआ है, और 1000 केसेस डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट से 11 कोर्ट्स हैं दिल्ली में. ऑल ओवर इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ. 11 हमने करीब 1000 केसेस 2005 से लेकर के और 2022 तक हम लोग कर चुके हैं. और इसमें पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं और डॉटर इन लॉ भी हैं. लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि डॉटर्स भी हैं. डॉटर्स वो हैं जब डॉटर विडो हो जाती है और फिर वो आके लड़की कहती है मम्मी जी मैं आपका ध्यान रखूँगी. मम्मी आती है, बच्चे वो लड़की विडो की लड़की आ जाती है और थोड़े दिन के बाद दामाद भी आ जाता है. तो वो सब दोनों आदमी आकर के और विडो को बाहर फेंक देते हैं और उस मकान पे कब्जा कर लेते हैं. तो हमने ये चीज़ें भी नोट करी हैं और हमने उन लोगों के केस लड़े हैं और हमें 100% डिविजनल कमिश्नर के यहाँ अपीलेंट कोर्ट में हमको उसमें कामयाबी मिली है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेंटेनेंस एक्ट हमारे लिए बहुत चीज़ है और इसमें हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है. अगर कोर्ट में आदमी अगर जाता है तो वो 20 साल बाद इतने वो मर भी जाता है लेकिन उसको फैसला नहीं मिलता है. लेकिन ये मेंटेनेंस एक्ट है जो 90 डेज में इंसाफ दिलाता है. लेकिन एक मैं मानता हूँ कि मेंटेनेंस कोर्ट में भी 2-2 साल की डिले है, वो डिले नहीं होनी चाहिए. अभी मीटिंग ली थी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने और उन्होंने ये कहा था कि हम इसको मिनिमम कम करेंगे. धन्यवाद. Thank you, and I'll quickly request Ghazala ma'am to please say a few words. She is former Joint Secretary MSJ. Just quickly, ma'am, your reflections on the report. नमस्कार सबको. बहुत अच्छा लगा कि हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और हम कोई ना कोई रिपोर्ट हम लोगों के सामने हेल्पेज वाले प्रस्तुत करते हैं और बहुत प्रिविलेज फील करते हैं कि हम लोगों को ये लोग याद करते हैं और बुलाते हैं और हमारे लिए भी एक तरह का वो हो जाता है कि एवरी ईयर वी कम एंड रिजॉल्व कि हम इससे बेहतर करेंगे. तो हम लोगों ने जो सरकार ने तो बहुत सारी स्कीमें बना दी, हम लोगों के पास बहुत स्कीम्स थी. अब और भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स बन गया है, विमेन के लिए अलग ओल्ड एज होम्स वगैरह का प्रोविज़न है और हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी एल्डरली के लिए बहुत प्रोविज़न है. प्लानिंग कमीशन आपने सुना था, नीति आयोग से जो मैडम आई थी उन्होंने कितना बताया, तो वो सब तो ठीक है. लेकिन अब जो मेरा इतने दिनों का तजुर्बा है वो ये कहता है कि जैसे गुप्ता जी ने कहा कि ये हमने जो मेंटेनेंस एक्ट बनाया था वो इस तरह बनाया था कि एक फैमिली कोर्ट की तरह ये काम करे कि जिसमें बच्चे जाएं और आपस में सॉल्यूशन हो जाए. लेकिन अब जो रिवाइज हुई है वो जो जैसे अनुपमा मैडम कह रही थी, तो रिवीजन हुआ है वो शायद अब क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें
लॉयर्स का दखल हो रहा है। हम लोगों के टाइम में जो 2007 का एक्ट है उसमें लॉयर्स का दखल नहीं है, उसमें सब आप मतलब एक डीएम कोई ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो ये सब रिकॉन्सिलिएशन ऑफिसर वगैरह होंगे। लेकिन अब चूंकि जो आपको मुश्किल लग रही है कि वो आगे बढ़ नहीं रहा है वो इसीलिए। और मैम को भी मैं ऐसे ही कहूँगी कि प्रॉब्लम मेंटेनेंस एक्ट का ये है कि पेरेंट्स ही नहीं जाते बच्चों के खिलाफ। आप कितना भी कहिए, पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करें या उनके घर की बातें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर तक पहुँचे और वहाँ पे आपस में वो सब हो। तो ये है। और बाकी मेरा अपना परसेप्शन ये है कि हमको मेहनत सब लोग कर रहे हैं, सब NGOs हेल्पेज वगैरह, बट वी हैव टू नाउ टेक दिस बैटल टू द डिस्ट्रिक्ट्स एंड टू द विलेज पंचायत्स। जब तक सारा प्रॉब्लम आपका एक तो रूरल एरिया का है और अर्बन स्लम्स का है, जहाँ हम लोग अच्छे लोग सब बैठे हुए हैं, यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें करके चले जाएंगे, लेकिन अर्बन स्लम्स और रूरल एरियाज में जहाँ पर औरतों के पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता। आप देखिए, आप कमा के लाइए कुछ पैसे, आप क्यों भिखारी औरतें बाहर घूमती रहती है? बिकॉज दे टेक दैट मनी बैक होम। इवन इन द विडोज ऑफ वृंदावन वी सॉ द सेम, मैडम विल टेल द सेम थिंग, कि वो सारे साल सामान ही कलेक्ट करती रहती हैं अपने घर वालों को खुश करने के लिए। सो अनलेस यू आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड, आपको जब तक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं होगा, हेल्थ, तो आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग इनफैक्ट इवन इन द मिनिस्ट्री कि जब तक हम इन लोगों को हेल्थ, जो अब बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब NPHC वगैरह हो गया है और ये स्कीम्स चल गई हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन हम लोगों को सबको एज अ सिविल सोसाइटी ये प्रण करके और इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन में इसकी मदद करनी है। गवर्नमेंट ने तो कर दिया जो वो कर सकते थे। तो आई डोंट टेक टू मच टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। Thanks, ma'am. Thank you so much. No, thanks, ma'am. Now I'll request Pragya from Ipsos, because she is our research partner. So she will quickly say her experience of data collection and what insights. Quickly in 50 seconds. नमस्कार। Thank you. जैसे अनुपम ने बताया, मैं प्रज्ञा जैन हूँ, इप्सॉस रिसर्च ने इसमें रिसर्च की है। कुछ बातें क्योंकि मैं रिसर्च एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, और जब हम 3 साल से ये स्टडी कर रहे हैं हेल्पेज के लिए, जब हमने शुरू किया, हमारा ये अजम्पशन था कि जब हम वर्किंग क्लास के लोगों से बात करते हैं, अंडर 60 के, हमारा अजम्पशन ये रहता है कि लोग काम पे जाएंगे, चाहे महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, और हमें उनसे टाइम नहीं मिलेगा बात करने के लिए। हमारा अजम्पशन था कि जब हम एक एल्डरली से सर्वे करने जाएंगे, मच ईजियर होगा, क्योंकि वो लोग घर पे अवेलेबल होंगे, टाइम मिल जाएगा उनको। और हमने ये देखा स्टडी के दौरान, और स्पेशली इस बार, क्योंकि इस बार हम सिर्फ औरतों से बात कर रहे थे, घर पे होने के बावजूद भी मैक्सिमम महिलाएं घर पर हैं, उनके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। दे आर सो बिजी इन देयर केयर टेकिंग रोल्स। और जो है दूसरी फ्रीडम की बात करते हैं महिलाओं के, जिसको हम रिसर्च टर्म में एजेंसी बोलते हैं, एजेंसी टू चूज वेदर दे वांट टू टॉक टू समबडी और टू डू व्हाट दे वांट टू डू इज वेरी लो अमंग्स women. So they are not free to decide if they can talk to person who has come at the door and saying that मैम ये सर्वे करना चाहते हैं हम, और हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। तो एल्डरली के केस में और स्पेशली विमेन के केस में दिस हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हमें उतना ही प्रॉब्लम हुआ ऑलमोस्ट जितना कि हम एक वर्किंग क्लास के सर्वे जब हम करने जाते हैं एज एन एजेंसी किसी और रिसर्च में, जो हमें इस स्टडी में फेस करना पड़ा। दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. Otherwise also, because this study talks about women across ages, not just elderly, what we have seen is कि जो महिलाओं के केस में जो रिसर्च होती है, जैसे अनुपमा ने भी बोला, इट्स प्राइमरली इन रिप्रोडक्टिव एज। आप देखेंगे अगर इंडिया में जितना भी काम हो रहा है, जच्चा बच्चा के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, डिलीवरी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसमें ना कि सिर्फ परिवार के लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट से भी बहुत स्कीम्स हैं, पैसा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और उसी को जब आप देखेंगे कि एल्डरली विमेन के लिए या इवन मेन के लिए भी जीरियाट्रिक केयर इंडिया में बहुत ही पुअर है। अगर आप लोग तो सब देखते होंगे, आप जानते होंगे ऐसे लोगों को जिनको जेन्युइनली हेल्थ केयर की ज़रूरत है घर पे, क्योंकि शायद वो मूव नहीं कर सकते इतना बाहर। ट्रेन्ड पीपल टू टेक केयर ऑफ एल्डरली इज़ वेरी वेरी पुअर इन इंडिया। यू विल स्टिल फाइंड अ पर्सन, लड़का या लड़की, जो कि एक छोटे बच्चे को देख लेगी। एक छोटे बच्चे का कपड़े बदलना, उसकी पॉटी साफ करना, उसको बाथरूम लेके जाना, इसके लिए हमारे देश में सपोर्ट है। पर एक जेरियाट्रिक केयर के लिए अगर आप किसी को लेके आएंगे, अगर आप उसको फुल पेमेंट देके घर पे रखेंगे और उससे कहेंगे भाई ये बीमार हैं, इनके कपड़े बदल दीजिए, इनका कुछ गंदा हो गया, ऐसा आपको नहीं मिलेंगे लोग। पीपल कंप्लीटली से नो अबाउट दिस एंड देर इज नो सिंपथी और सपोर्ट टूवर्ड्स द एल्डरली। एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी अनुपमा, जस्ट लास्ट वन, कि ट्रांजिशन ऑफ पीपल हु हैव जस्ट रिटायर्ड
to the retirement age is also very poor in India, as every individual, chahe wo purush ho ya mahila ho, we don't know how to transition, and that is why people willingly or unwillingly take caretaking roles. Because क्या करें retirement के बाद? मैं भी as a woman, I am working. After 60, what do I do? I've been working all my life. इतनी busy थी, घर में काम कर रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ. Suddenly I'm free. Men के case में भी वही है. क्या करें अब उसके बाद? तो forcefully they are taking caretaking roles, whether they want to do it or not. This is not something that anybody asks us. कोई हमसे पूछता नहीं है और मुश्किल हो जाता है सबके लिए. Thanks इन्हीं for सब points पे resonating, हाँ Pragya. I मैं खत्म know करूँगी. you feel very strongly about it. I know. Thank you very much. Thank you. आपने देख लिया कि कितने dedicated लोग हैं हमारे साथ भी जो काम करते हैं. They can't stop talking about it. So thank you very much. Over to Sonali now. Sonali जी नहीं. सुरेश जी, आपसे मैं अलग बात करूंगी. मुझे आपका इतना कंट्रीब्यूशन और इतने थॉट्स है. आई विल स्पीक टू यू आफ्टर दिस. हाँ सुरेश जी, 5 मिनट के आप वेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए. 5 लाइन, मैं आपके 10 लाइन सुनूंगी थोड़ी देर के बाद, कि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं ना. थैंक यू. अच्छा, आई थिंक आई वुड नाउ वी गेट इनटू द नेक्स्ट सेशन. आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू प्लीज सेट द स्टेज फॉर द पैनल डिस्कशन. If you could bring on the table and the chairs, please. And I would like to first share a little bit about who we have with us today. We have with us Dr. Meera Khanna, social activist and trustee, Guild of Service. Professor Pinky Mathur Anurag, Director, Center for Human Rights Studies, OP Jindal Global University. We have with us our very own Dr. Mala Kapoor Shankar Das, gerontologist and from the Delhi University. And we, of course, have with us ACP Rita Dhamija from the Delhi Police Corps, which is Crime Against Women. While we are setting shop, our person who will be moderating this particular session will be our very own Dr. Imtiaz Ahmed, who is the mission Aged Care for Helpage India. He will talk a little bit about the guests who are going to be on the panel today. Imtiaz, come. थैंक यू सोनाली. मैं जब ऊपर आता था, सोनाली ने बोला टाइम कम है तो जल्दी कीजिए, तो मुझे ये शेर याद आया कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 दिन आरजू में गुजर गए, 2 दिन इंतज़ार में. तो विदाउट फर्दर एडो आई विल इनवाइट द पैनलिस्ट हियर, माय को पैनलिस्ट डॉक्टर माला कपूर शंकर दास, डॉक्टर मीरा खन्ना, प्रोफेसर पिंकी माथुर, ACP रीता धमीजा. इफ़ आई कैन ऑल रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन टू द स्टेज प्लीज़. थैंक यू. Without any further ado, since we are constrained for time, we'll start the panel discussion. We're very happy to have a very august panel with us. And I will start with Professor Mala Kapoor Shankar Das. Just to introduce briefly, all of you know Professor Mala Kapoor Shankar Das. She has been associated with us for a very long time. She is an ex-professor of Delhi University, and she is a gerontologist of very international prominence.
So, Professor Mala, I mean, you've seen the report today, what Anupama has presented, and the discussion subsequently. I'd be very keen to know because because as implementer, we are basically sailors who are just sailing the ship. But you are the one who are up there on the mast, looking into the future of how it is all going to unroll for the ship which is sailing and the route it is taking. So my question to you would be, in terms of the demographic transition that you see in India, in terms of the female elderly, the women elderly especially, where do you think it is going, and what are the issues that you think are going to emerge? Some of it has been highlighted in your report, but I'll be very keen to understand from you what are the issues of care, support, and other needs that's going to emerge, and what are the experiences that you can share from the best practices from the international arena in other countries, what is happening, what India can learn from it. So over to you, Dr. Mala. Thank you. How much time do we have? Just to inform, we have 5 to 6 minutes each panelist, and that would be... Okay. हाँ जी, हाँ, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ और हेल्पेज इंडिया जिनके साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ, और ये मौका मुझे मिला कुछ अपने पॉइंट्स प्रकट करने का। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपकी रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है और जो आपने काम करा है, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम सामने आ रही हैं, बट कुछ इसके पीछे की छुपी हुई चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, और कुछ अलग मुल्कों में ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, और अगर हम भारत में इस चीज़ पर भी नज़र डालने लगे कि इनका मीनिंग क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसके अंदर की उसका मतलब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो हमें देखना है। सो रिपोर्ट पर बेस करते हुए मुझे लगता है कि लिटरेसी लेवल्स को अगर हम देखते हैं तो औरतों का बहुत कम है लिटरेसी लेवल, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिटरेसी जो एक हमारा टूल है एम्पावरमेंट का, जिससे हमें आगे बढ़ने की काफ़ी सपोर्ट मिलता है, उसकी कमी है। और इस लिटरेसी में जो इसके साथ ही रिलेटेड है फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इन सब की कमियां दिख रही हैं, और इनके बिना एक औरत को रोज़ का काम करना लीगल मैटर्स में, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस हो भी तो वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, ये चीज़ों का बहुत घबराहट सी होती है कि औरतें जो हैं वो कर नहीं पा रही, और उसमें बैंक में जाना, अपना हेल्थ केयर का कुछ करना, आजकल कोविड टाइम में सब कुछ डिजिटली हो रहा था और औरतों को इस चीज़ की बहुत कमी महसूस हो रही थी। दूसरा मैं पॉइंट कहना चाहूँगी कि जैसे हम देख रहे हैं कि बैंक्स में औरतों के नाम पर है नहीं, उनके अकाउंट ज़रूर है, पर जो वो ऑपरेशन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाती। तो लिटरेसी लेवल के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको एम्पावरमेंट के ज़रिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो एक एजुकेशन जो होलिस्टिक वे में होनी चाहिए उसकी कमी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका इम्प्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट पर भी है। जब आप स्किल्ड नहीं है, जब आपके पास ज़रिया नहीं है अपने आप को लेबर मार्केट में रखने का, तो आपको कोई अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। और अगर अच्छी जॉब नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी कैसे आएगी आपके पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे आएगी। ये सब चीज़ें भी बहुत हमें बता रही हैं कि औरतों का डिपेंडेंसी पर क्यों इतना वो है कि why are they so dependent? Because they don't have the means to be independent. They don't have the means to stand on their own. And why they don't have proper education, they don't have proper legal awareness, they don't have proper skills, they don't have proper knowledge
which equips them. We train them for household activities, but आप देखिए अब household activities में भी कितना परिवर्तन आ रहा है. कुछ देर पहले मैं पंजाब के कुछ गांव में गई थी और वहाँ वो औरतें यही कहने लगी कि आजकल जो हमारी बहुएं आई हैं वो सब हैं माइक्रोवेव यूज़ कर रही हैं, टोस्टर यूज़ कर रही हैं, कितना कुछ यूज़ कर रही हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती हम उसको कैसे ऑपरेट करें. और ये हमारी जो बहुएं हमें कहती आप पीछे हट जाइए, आप बस उधर जाकर बैठ जाइए. तो इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ रहा है उनकी ज़िंदगियों में, ये ध्यान रखने की बात है. तो हमें ये जो जेंडर और एज डिस्क्रिमिनेशन और जो एजुकेशन के साथ, डिजिटल लिटरेसी के साथ, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ फ़र्क पड़ रहा है, उसमें एम्पावरमेंट का बहुत ध्यान रखना है. आई मीन औरतें हैं उधर गांव में कहती हैं कि हाँ पेंशन तो हमारे नाम पर आ रही है, हमारी थोड़ी इनकम भी हमारे नाम पर है, बैंक में हमारे खाता भी है, पर जब हम साइन करने जाते हैं तो हमें हेल्प चाहिए, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें हेल्प चाहिए, और हम फिर सब डिपेंडेंट रहते हैं, कोई साथ ले जाए या नहीं ले जाए. तो ये चीज़ें बहुत उनको मुश्किल में डाल देती हैं. और एक डिपेंडेंसी एलिमेंट जो आ जाता है ना कि आप कुछ भी अपने आप नहीं कर सकती, वो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारी जो औरतें हैं वो शुरू से ही अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना स्टैंड ले सके, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके. सो ये सब चीज़ों को, और देखिए जैसे आपने पहले भी अनुपमा ने कहा कि प्रॉपर्टी तो उनके नाम पर है, बट प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है. और उसके अलावा जो मेरे को देखने में आ रहा है और कुछ जो मेरा काम भी बता रहा है, लेडीज़ के नाम पर प्रॉपर्टी है पर प्रॉपर्टी ग्रैबिंग के कितने केसेस हैं जिधर उनको झूठ से उनसे साइन कराया जाता है, उनसे बताया नहीं जाता है प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है. अगर 10 लाख है तो उनको 2 लाख कह के कहा जाता है. तो ये सब चीज़ें हम जब तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो एम्पावरमेंट है वो कम हो जाएगी, और वो लेडीज़ जो विजिबल होनी चाहिए, जो आगे होनी चाहिए, वो पीछे ही रहेंगी. सो एक और चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि हाँ ये ज़रूरी है कि हमारी औरतें आजकल काम कर रही हैं, दे आर वर्किंग, लॉट ऑफ ओल्डर पीपल आर वर्किंग, बट द क्वेश्चन इज आर दे वर्किंग आउट ऑफ चॉइस or are they working out of compulsion? Some of them are working out of compulsion. And why should any person have compulsion which goes against their health, which goes against their status and doesn't give them respect, but still they continue to do it? So are we improving their working conditions? इनफॉर्मल सेक्टर में वो काम करते हैं, बट इनफॉर्मल सेक्टर की रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो उनको सपोर्ट करती हैं, उनकी वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव करती हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स दे रही हैं. तो ये हमारी कंट्री को अपनी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हेल्थ का आपने बताया, हेल्थ केयर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स देख रही थी आपकी रिपोर्ट में, उसमें कहा जा रहा है कि एज यंग दे वर बेटर ऑफ, दे हैड मोर प्रोविजंस फॉर हेल्थ, बट बाद में उनकी हेल्थ केयर बिगड़ती जाती है. एक रीज़न तो है कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती ओल्ड लोगों की हेल्थ को, पर दूसरा रीज़न जिसके लिए मैं भी काफ़ी गवर्नमेंट के साथ भी और कुछ प्रोफेशनल्स के साथ भी लड़ती हूँ कि हमारा पूरा सेटअप में पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पर एम्फोसिस है ही नहीं. जब तक बच्चे दे सकते हो वो है तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी घरों में. द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, nobody is really bothered about you. We don't have proper facilities, we don't have proper provisions, but the impact on your chronic health, on your heart, on your limbs, on your orthopedic thing, on blood pressure, on hormonal changes, ये सब बहुत है. On your mental health, अब mental health वैसे ही कंट्री में उसका लो है, और इसमें हम कहें तो ओल्ड लोगों के लिए वैसे लो है और फीमेल्स के लिए तो और भी लो है. कोई भी आप हम वैसे ऑल ओवर डिफरेंट कंट्रीज वी आर टॉकिंग ऑफ द हैप्पीनेस
indicators of good health, of good healthy well-being. But if we do not emphasize on mental health, where is the happiness indicator? कोई भी नहीं आपसे पूछते हैं आप खुश हैं बस हाँ आप ठीक हो तो बस ठीक है but ठीक तो हैं but that mental health where you feel I am enjoying life, I am happy with my situation, I feel happy to be in these surroundings is very important, and I think that is missing and we need to pay attention. And then I would just like to say something about caregiving, which I would then like to end with is, yes, we talk of older people should remain active, घरों में काम करें, बहुत अच्छी बात है, हमेशा एक्टिव एजिंग पर इतना कुछ चल रहा है, पर क्या एक्टिव एजिंग सिर्फ जॉब के साथ ही है? एक्टिव एजिंग में ये नहीं होना चाहिए कि जो आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सकें, जो आप एक्टिविटीज जिनको एंजॉय करती हैं वो कर सकें, आपको टाइम दिया जाए, आपको उसकी इम्पोर्टेंस मिले. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स व्हिच वी नीड टू टॉक अबाउट. And the participation of women in families, in communities, in society needs to be emphasized from a wider perspective of their rights, of their dignity and their respect. So I feel your report is leading us to some of these hidden agendas which have to be brought forward, and the government's made aware that there are many components which go beyond statistics, and we need to talk of quality of life for these older women. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर माला. आई थिंक आपने अपने डेलिब्रेशन में बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया आज के डिस्कशन का. वो एक चीज़ उभर के आ रही है जब मैं आपकी बातें सुन रहा था कि एक जो हमारी जो कहते हैं स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होती है, तो एक वुमेन के अगेंस्ट में ये स्ट्रक्चरल कंटेक्स्ट बिल्कुल स्टैक्ड होके हैं. और जब आप देखते हैं, जब हम बोलते हैं कि बुज़ुर्ग जो हैं, एल्डरली जो हैं वो डिसएडवांटेज हैं, उसके अंदर अगर आप देखिए एल्डरली वुमेन जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं. तो आप देखिए एक लाइफ साइकिल, जैसे बच्ची घर में पैदा होती है, फिर अपने घर पे देखती है कि उसकी प्रायोरिटी नहीं है पर बेटे पे प्रायोरिटी हो रहा है, फिर वो शादी होके आती है तो अपने ससुराल में देखती है कि प्रायोरिटी और कुछ है, एंड शी इज़ जस्ट यूज्ड एज ए मीन्स टू एन एंड. और फिर जब वो होप करती है कि उसके बच्चे उसको देखने लगें, तब भी वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है. तो ये जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, जो इनएफिशिएंसी हमारे यहाँ बैठी हुई है, दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट स्पीकर ऑफ टुडे, डॉक्टर मीरा खन्ना. मीरा खन्ना एक सोशल एक्टिविस्ट है, राइटर, पोएट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं गिल्ड फॉर सर्विस, एक एनजीओ जो काम करती है मार्जिनलाइज वुमेन और चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री. उनकी बहुत रिच एक्सपीरियंस रही है, 20 साल से अंडर प्रिविलेज वुमेन के साथ काम करती है. मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी एक्सपीरियंस में विद अंडर मार्जिनलाइज एंड अंडर प्रिविलेज वुमेन, आपको क्या चैलेंज लगता है कि एल्डरली वुमेन फेस करती हैं, जो होती है उनकी एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, एंड द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी लाइक योर एनजीओ एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स देम. बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें. Can I answer from there? If you wish to. You know, having been a teacher once in your life, you can never get rid of this habit of wanting to address someone. So bear with me. I feel little more confident about my opinions and views and perspectives when I'm standing. First of all, I want to say, why does abuse of elder women come as a surprise to us? Because it is just an extension of the abuse that women already face. Whether they are from the womb to the tomb, from the cradle to the grave, women have been facing different kinds of abuse. So in old age, it is only an extension of that abuse, so should not come as a surprise to us. Because in a patriarchal society like India, where women's traditional roles are being given, so as the woman grows older, the traditional roles of reproductivity is no longer applicable to her. So she is devalued and becomes literally a non-entity or a zero of the Indian society. And you know, this is despite the fact that the Indian Dharma talks about respect to the older people and dignity of the older. But I suspect that when tradition talks about
respect to the older, they meant respect to the older men. That they did not mean respect to the older women. We work in the area of underprivileged women, particularly widows and aging elderly widows, and we have a ringside view of the spectrum of emotional, physical, financial, and psychological abuse that women face. But despite, our earlier speakers did talk about feminization of aging. Poverty is already feminized. So when we talk of elderly women, there is an intersectionality of three vulnerabilities. Vulnerability as a woman, vulnerability as a poor woman, and you are exposed to the added burden of ageism. So it is cross-cutting of three levels of discrimination. But despite that, despite the fact that gender and aging are intersecting, we have very little data on this, which is why the HelpAge report is unique and should be a path-breaking report for NGOs to work in future. Now, when we talk about elder abuse, we always find who is to blame. When families are not able to give that modicum of physical comfort and abandon the old or throw them out of the house, then families are to blame. But if governments cannot give an accessible, appropriate, adequate social security system or make public spaces geriatric friendly, governments are to blame. When societies, by virtue of tradition, abuse, language, customs, they propagate ageism, society is to be blamed. When corporate houses cannot think out of the box to take advantage of the domain expertise that older people have, then industry is to be blamed. On the whole, we in India, we are living in some kind of a happy existence where we think that by virtue of the biology of motherhood and filial piety, families will automatically take care of the older women. That is what governments would like to believe. And that is what civil society organizations like HelpAge and us do not believe and do not want to believe. Because what is the general attitude? The general attitude is if parents have taken care of their children, then it is incumbent on the children to take care of the old when they become old. But by that logic, every old person who has contributed to the treasury of the government by direct and indirect taxes, then it is incumbent on the government to take care of them. If the older people have contributed to the GDP of this country, then it is important that the country takes care of them. If they have contributed to the society, then it is incumbent on society to take care of them. Which is why, Imtiaz, I want to come to my point, is that we are looking at the many hands approach. Because none of us, including the older people, including all us older people, can absolve ourselves of the responsibility to take care of the elderly. So it is time that we moved away from platitudes and actually walked the talk. To be fair, the government has been doing its bit. We have the Maintenance Act, but like the research shows, how many are aware? And women are even less aware than the men. Plus, the burden of proof, to prove that you are incapable of taking care of yourself, that burden of proof is on the elderly to provide. How can a widowed woman, for example, living with her son, give that burden of proof to the tribunal to say that I am not able to take care of myself and my son is not taking care of me? Is it even possible? So I'm glad in 2019 the amendments have still not come, because we need to rethink on that law to engender that law. Let us not throw away the baby with the bathwater. The law should be there, but let us make it engendered. Then secondly to that same act, when the younger generation, the son, the daughter-in-law,
daughter is supposed to take care of the older people or the parents. But what happens when they themselves are financially constrained? They don't have the money to take care of the elderly. What happens then? So the government of India has said, okay, let us put old age homes. But in the PIL filed by Dr. Ashwini Kumar versus the government of the Union of India, the record says that the ministry which supports shelter homes, they are supposed to support shelter homes in various districts, one per district. The last count, we have only 551 old age homes. By the way, in our country, we have 766 districts. And a hugely populated district like Thane will also have one old age home, and a sparsely populated district like Dibang in Arunachal Pradesh also will have only one home. So until and unless we make the game plan might be there, Ghazalaji, but it has not been footed on the ground as yet, which is why I'm bringing to that. According to the Census 21 projections, the elderly population, female is 7.1 crore to 6.7 crore of the men. And as all the speakers have been talking, financial insecurity is the most pertinent issue faced by 57%. This is the HelpAge earlier report. And about 45% had reported inadequacy of pensions, while 38% had cited lack of employment opportunities. Now, women, the fact that they are not working, the fact that they may not own property, the fact that they are employed in the unorganized sector makes them more financially dependent on their children, which we saw in the report. Now, Christopher Garraway in 2013 did a very illuminating study on pensions. And he had said, and it was supported by the data, for example, the widow's pension was shown to reduce poverty around 2.5% among recipients. And furthermore, estimates suggest that if all widows received the pension, it would reduce poverty among widows by 3.6% and increase consumption by 70 rupees per capita. So clearly, with a less amount of money, you can actually give some kind of modicum of economic security to older women. But how is it actually on the ground? The eligibility factor. In our shelter home in Vrindavan, we spend hours of unproductive time trying to get the no income certificate, the death certificate of the husband, Aadhaar card rectification, because eligibility is for the pension is closely related to all these things. And for a woman, and for an uneducated woman, it is extremely difficult. Plus is the limited coverage. From pensions for widows, for example, ranges from 600 rupees to 2,500 rupees, which as you know is less than the daily wages. Do you know the last time the pensions, both old age pension and widow pension, was reviewed was in 2007. From 2007 to 2023, we've had 2 finance commissions. We had a sixth pay commission in 2008. Sorry, not finance commission, pay commission. In 2008, we had 1 pay commission. In 2015, we had the 7th pay commission. And 2024 is going to be the 8th pay commission. Really sorry to interrupt. Just 1 minute. I will take 2 minutes to wind up. Please. Which means that in these intervening years, keeping the price hike in mind, the pay commissions have religiously given hike to the central government employees. But old age
who do not have any other modicum of economic security, their pensions have not been increased from 2007. After that, inflation has gone up multiple times. Now, clearly there are gender-based disparities in the pension scheme, which we need to address. I'm going to take two points further. One is, why do elderly women face abuse? It's because elderly women are competing for that small economic pie of the family. So if we want families to take care of our elderly, we must make it easy for them to do so. Which is why the Guild has always been advocating for a tax benefit for the sandwich generation. The generation that is looking after both children as well as older people. We need to do some kind of a out-of-the-box thinking. For example, you can have a dependent exemption. If you provide more than half of the financial support for your aging parents, then perhaps you can meet a criteria for taking a certain tax benefit. Or you can take tax benefit on medical expenses. By the way, under 80... I'm really afraid we run out of time. Okay. Can I wind this up? Please, please. Otherwise, it will be left hanging No, in the air. please. 80D, the 80D exemption does give some exemption, but that is mainly for premium paid on insurance policies for the older. For medical expenses up to the age of 60, it is only 50,000 rupees. Above the age of 60, it is 75,000 rupees. You can claim an exemption. With CAT scan costing 4,000 rupees, what does 75,000 rupees mean? Imtiaz has been showing eyes to me, so I need really to... I'm really sorry, ma'am. Really completely run out of time. I do have a point of reverse mortgage for those women who own houses, like Helpage said, 88% own houses. I'd like to come to that. Finally, I want to say, Robert Browning said the best is yet to come. I want to see hamara time kab aayega. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I'm sure apna time aayega. Thank you so much. Ma'am, really sorry, really running out of time. So thank you so much, ma'am, for your deliberation. I think a lot of very important and pertinent points that has come out, and what gets me thinking in terms of also the fact that the constraint that the women have in terms of the systemic constraint and the constraint from a the approach of the society and the family. I think what has also come out in the report very prominently is the abuse data that is there. So I would really like to go to my next speaker, Ms. Rita Dhamija. We're very fortunate to have ACP Counseling, Complaint and Senior Citizen Security Cell, Delhi Police. Ma'am, we're very fortunate to have you, ma'am. You've seen the report. There is a major percentage of physical abuse, which we never used to see in our report. So abuse against elderly in terms of physical is on the rise. The elderly do not know what are the redressal mechanism and not really keen to take it up. So ma'am, really want to understand from you what is it in your experience you've seen, and from the perspective of the Delhi Police, what needs to be done going forward. Thank you. Thank you very much, Imtiaz sir. Thank you. मेरा नाम ACP रीटा धमीजा है और मैं स्पूएक स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन मोती बाग नानकपुरा से आई हूँ, और मैं ACP काउंसलिंग और पूरे दिल्ली का सीनियर सिटीजन की ACP हूँ। और मुझे आज यहाँ आप सबसे इंटरेक्ट कराया गीतिका मैम ने और शिवांग जी ने, और स्पेशल इनविटेशन हम तो ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें बुलाए, और बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलके, और इतना इंटरेस्टिंग इवेंट है ये। स्पेशली मैं आपको ये थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में, जिसमें यूनिट के बारे में जिसमें मैं काम करती हूँ और मुझे काम करने का मौका मिला है। हमारे स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर SK गौतम, सुनील कुमार गौतम सर हैं, जो कि स्पूएक और सीनियर सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं, मैम ने इससे पहले भी जो हमारी स्पीच हुई है उसमें ये बताया है कि भाई महिलाएं थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब तो काफ़ी सशक्त हो चुकी हैं, और हम लोगों के पास उनकी जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो हमें कांटेक्ट करती हैं, कंप्लेंट हम लोग लेते हैं, और उनके जो हस्बैंड, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है
जब ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि लड़का कहता है कि मुझे नहीं बात करनी है और लड़की कहती है मुझे बात नहीं करनी है, फैमिलीज में डिस्प्यूट, तो हम लोग आगे आते हैं, हमारे पास आना ज़रूरी है। फिर हम लोग आते हैं, उनका कोशिश करते हैं कि उनके घर बसा दें। और लड़कियां मैंने आज अपडेट देखी हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि रहना है तो रहना है, नहीं रहना है तो अब ये इसके साथ नहीं रहा जाएगा। तो अच्छा लगता है ये सब सोचने का, जो पुरानी ये बातें थी कि नहीं हमें तो जो पति का घर है वहीं से अर्थी निकलेगी और वहीं से डोली आई है, ये सब चीज़ें बहुत पीछे जा चुकी हैं। अगर विचार नहीं मिलते हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उनको अलग भी किया जाता है उनके जो लेकिन एक मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। मेंटेनेंस के लिए कोर्ट को ही हम लोग अप्रोच करवाते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस और 125 सीआरपीसी में आप उसमें जाएं। ये महिलाओं का है, अगर कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप हमसे कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो इम्तियाज़ सर से मिल जाएंगे। और दूसरा हमारा सीनियर सिटीजन की एसीपी भी हूँ मैं। सीनियर सिटीजन्स जो तो हमारी धरोहर हैं, और गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हेल्पेज इंडिया के साथ हम दिल्ली पुलिस जुड़ी हुई है, और यहाँ आने का हमारा मकसद सिर्फ इनके साथ जुड़े होने की वजह से है कि ये हमें ले आते हैं कि क्योंकि हम भी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों से डायरेक्ट मिल लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स का गुप्ता जी ने तो यहाँ पे कंपनी, ये कौन सा पार्क है, डियर पार्क में इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे सारे सीनियर सिटीजन्स को जोड़ा हुआ है। उनके केसेस वगैरह को भी वो अप्रोच करते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए देखिए, बच्चों की ड्यूटी है कि आप पेरेंट्स का करो, ये हमारा कानून कहता है। हम कैसे भी हों, 60 साल के अगर हम हो गए हैं तो आपके कंधों पे हमने बैठना है, आपको हमारा खर्चा उठाना पड़ेगा। हम कैसे भी हों, हमारी स्थिति कैसी भी हो, आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो हम अपने बच्चों को, कभी आपने देखा होगा कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों, टाइम तो सर 2 मिनट ले लो ना, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही नौकरी पे चले जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को जब हम छोड़ के चले जाते थे और वो दीवारों से बातें करते थे, थोड़ा सा हमें ना, तब जब ये छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा सा हमें उनको भी ध्यान करना है, क्योंकि वही प्रवृत्ति उनके अंदर चली जाती है। समय लौट के आता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं और वही हमारा स्टेज आ जाता है और हम दीवारों से बातें करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम जरूर देना है, ताकि वो इसी संस्कार में पले बढ़ें कि हमारे पेरेंट्स कितने भी बिजी थे पर हमारे लिए वक्त था उनके पास। मैं सभी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बच्चों को भी करती हूँ कि क्योंकि मैं ऐसी ही यूनिट में काम करती हूँ जहाँ बच्चों की भी प्रॉब्लम्स हैं। वो बच्चे हमसे कहते हैं कि हम जब छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा भी तो चले जाते थे, तो हमें भी बाहर जाना है। तो थोड़ा सा हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है। प्लीज़ आप लोग, अपने बच्चे हमारे इतनी ऐसी मिट्टी के हैं जिनको हम जैसे बनाएंगे वैसे बन जाएंगे। आप एक बार उनके अंदर यही चीज़ डाल के देखो कि भाई हम आपको केयर करते हैं। गुप्ता जी के तो बच्चे सारे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि ये उसी घर के आस-पास घूमते रहते हैं, और इन्होंने कई परिवार ठीक किए हैं। देखो ऐसे हम लोग, मैं तो बहुत 2011 से जुड़ी हुई हूँ गुप्ता जी के साथ, और ये हमें बुला के सीनियर लेवल तक सबको बुलाते हैं। तो हम सबको जुड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। और 1291 हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, आप उस पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा www.dillipolice.nic.in ये हमारी ईमेल आईडी है। आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। जिनका कोई यहाँ पे बच्चे जो बाहर रहते हैं या वो सिंगल पेरेंट हैं, यहाँ पे अकेले रहते हैं, स्पाउस रहते हो, कोई बात नहीं, वो हमसे कांटेक्ट करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, हमारे बीट वाले आपके साथ जुड़ जाएंगे। और हर सीनियर सिटीजन हमारा है। आप अपने बीट वाले को, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आपके चक्कर लगाता है या एसएचओ होता है, उनसे डायरेक्ट फ़ोन करके कहा करो मैं आपका सीनियर सिटीजन हूँ, आप मेरे घर आओ, कम से कम चाय पी जाओ। चाय देखो पुलिस वालों को बहुत मिलती है, लेकिन एक मिलने जुलने का तरीका होना चाहिए। आप अपने घर में जितने भी ये वेंडर हैं और ये जो भी आप सब्जी वब्जी वाले हैं,
इनके फ़ोन नंबर जो है पुलिस को दे दो, अपने फ़ोन नंबर पुलिस को दे दो, उनकी आजकल ग्रुप बना हुआ है सीनियर सिटीजन का, आप उसमें ऐड हो जाओ। नमस्कार। और हमारे नंबर इम्तियाज़ सर के पास हैं, आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सबकी जानकारी के लिए एक एल्डर लाइन है, टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस 14567। ये नंबर डायरेक्ट आप डायल कीजिए, टोल फ्री नंबर है। कुछ भी आपको इशू है, हमारे टीम है यहाँ पे दिल्ली में, वो इमीडिएटली एक्शन लेगी। मैम के साथ, पुलिस के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो ये एक एवेन्यू है आपके लिए। नाउ वी रियली आउट ऑफ टाइम, कमिंग टू आवर लास्ट पैनलिस्ट, Professor Pinky Mathur Anurag is Associate Professor in Jindal Global School. Ma'am, you have worked at the crossroad of women conflict and violence against them. You've seen the data, you've seen the kind of awareness that is there on the Maintenance Act, the kind of access that people are taking, and surprisingly, many of them don't want to talk about it and give some excuses trying to safeguard their children. So, ma'am, your thoughts on it? Is this working? Yeah. Okay, so lots of thoughts. I think it's an advantage or a disadvantage, you could say, because a lot has been already said, right? I get the feeling that I will really not have too much more to add, but to just bring in some thoughts. And शुरू में थोड़ा सा disconnected हो सकता है लगे, लेकिन you will see that there is a connection to all of that. So law में हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि legal empowerment, हम लोग empowerment की जो बात कर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट क्या होती है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जब हम कहते हैं कि एक औरत लीगली, औरत एम्पावर्ड है, तो वो एम्पावरमेंट कैसे आती है? आई एम एन एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, almost 3-4 generations of being the way I am, and even better in so many ways. But I don't think I have ever taken a big decision in my life घर पे without consulting my husband and without taking his approval. So सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजिंग की जो इशू है, वो जो एल्डरली की जो इशू है, it's actually very integral to the way our institutions are. So I think I would like to speak a little about our institutions. So when I say institutions, I mean family and marriage. They are intrinsically unequal institutions. There is inequality in the institution of marriage. हर फैमिली में एक हायरार्की होती है और काफ़ी हद तक वो हायरार्की जेंडर से जुड़ी हुई है। तो शुरू से लेके आखिर तक जब जेंडर इनइक्वालिटी रहेगी, तो आप एम्पावरमेंट की बात देखिए, आप एजुकेशन की बात हुई है, लीगल अवेयरनेस की बात हुई है, हर तरह की बात होती है, और ये सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर टियर पे, हर लेवल पे काम करते रहना है। यस, when women will be educated, you are giving them a tool to fight against violence and atrocity. But education in itself is not enough. That I can tell you as an educated woman, right? It is, तो ये जो पेट्रियार्की और ये जो जेंडर हायरार्की है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत रॉट है। वी नीड टू रीथिंक आवर इंस्टीट्यूशंस। और हर तरीके से अगर आप देखिए, हम कहते हैं कि बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते। आप ये बताइए कि जब शादी करके एक कपल साथ में रहने लगता है, तो उस पहली बात, उस रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है, वो ही इनइक्वालिटी बच्चा देख रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप एज अ कपल इंडिविजुअल पे आपने कहाँ फोकस किया। हमारे इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मैरिज और फैमिली की, कि इंडिविजुअल उसमें खो जाता है। तो हम जो कहते हैं सेल्फ एस्टीम की बात, या एज एन ओल्ड वुमन यू आर जस्ट बिकम अ केयर गिवर एंड नोबडी टेक्स केयर ऑफ योर पर्सनल नीड्स, those needs have never been taken care of for women ever, and men have never even had to question those needs. वो एक entitlement के साथ उन needs को अपना पूरा करते हैं, चाहे कैसे भी पूरा करें, और उस पूरा करने में वायलेंस भी जुटा हुआ होता है। तो बच्चे हमारा वही देख रहे हैं। दूसरी चीज़, जब हम बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बात अलग है कि आप उन्हें संस्कारी बनाइए और आप अपने माँ बाप को देखिए तो बुढ़ापे में वो आपको देखेंगे वगैरह वगैरह, ये कहानियाँ हमने बहुत सुनी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एज अ कपल इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप पे कितना फोकस करते हो? वहाँ पे एज अ कपल एक दूसरे की डिग्निटी का क्वेश्चन कहाँ आता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मेरे घर में कोई फैसला हुआ हो,
पिछले 28 साल में, बिकॉज माई डॉटर इज 28, जहां सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ना आया हो, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, उसके हिसाब से मैं छुट्टी लूंगी, उसके हिसाब से मेरा पूरा डे प्लान होगा, वगैरह वगैरह। और ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी करना, एम्पावरमेंट सब अपनी जगह है, लेकिन जब तक ये माइंडसेट फैमिली का चेंज नहीं होगा, मतलब कितनी मैं नौकरी करके आऊं 7 बजे तो मैं चाय पीऊं कि मैं पहले बच्चों का होमवर्क देखूं, मेरी आधी जिंदगी इसमें निकल गई। But I'm supposed to be an empowered woman, right? But the point really is this glorification of parenthood and motherhood. Let's dilute it a little bit. Because अगर आपने 20 साल तक बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट अपने घर में बनाया, फिर आप उम्मीद करें कि आप 60 साल की उम्र में उन पर डिपेंडेंट हैं चाहे नहीं है, वो एक सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर हो जाता है। लेकिन आप फिर डिपेंड करें कि वो अपने आप को फर्स्ट नहीं लगाएं और आपको पहले लगा दें, ये तो नहीं हो सकता ना। आपने जब अपने आप को ही पहले नहीं लगाया और पीछे डाल दिया, तो अब वो बुढ़ापे में आपको इंपॉर्टेंस देंगे। सो समवेयर वी हैव आल्सो गॉन रॉन्ग एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ फैमिली वैल्यूज वगैरह। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं, या माँ बाप की दैट होल आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट and acceptance and coexistence is changing, and everybody needs to change their mindset accordingly. And with this I will tie into what Meera ma'am just said. I do think that the aging, the dynamics of aging is changing so rapidly, and economics within societies is changing so rapidly, that unless the state comes in, you will never be able to empower the elderly. हर वक्त हर चीज स्टेट फैमिली के ऊपर, फैमिली, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज। आई विल गिव यू वन वेरी स्मॉल concrete example. Now, I have just come back from Singapore after presenting a paper there on the rights of the elderly in Singapore and in India, and looking at the legal aspects. And yes, it's very, of course, everybody will say Singapore is a very rich country. I don't think that's the reason. I think the reason is the right attitude. Now, the state actually indirectly assists children who are taking care of their parents. Tax benefits. They are given housing loans at a lower rate of interest if they buy a house close to their parents. So these are some very simple things that we can think of. Also, if the adult child is not able to take care of the parents, then the state will step in. Look at the rate of unemployment in the country. Look at the cost of education in the country. My house help sends her child to a private school because the government schools are not good enough. How can the family change the government schools in India, right? You make your education cost affordable for people, and you will leave enough disposable income for the elderly children to be able to take care of their children. पूरी आपके सारे पैसे तो बच्चों की ट्यूशन पे जा रहे हैं, आपके माँ बाप ने भी वही किया, आप भी वही कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे कहाँ बचेंगे माँ बाप को देखने के लिए? इफ यू व्हाट अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वी स्पोकन अबाउट हेल्थ, राइट? आप जो बच्चा, unless you are really below the poverty line, if you take your parent to a government hospital, you will be labeled a bad child. सरकारी अस्पताल में माँ बाप को लेके जाते हैं, वहां पे कोई इनकी देखभाल होगी ठीक से, बेकदरी होगी वहां पे। Who is going to rectify that health system? The family cannot come and do it. It is a state that needs to do it. So the issues with aging that we have today, yes, education, empowerment of women, everything. Change your institutions and everything will change. Bring equality, bring gender equality into the family and into society, and change the mindset. It's not just about creating super women out of women. What are women doing today? I think my mother was better off. She was responsible for the house and that's it. And my father took care of everything that's happening outside. I am expected to take care of everything. So if I tell my husband, deal with the plumber, or, you didn't do this, he will say, go out and do it yourself. He's actually said that to me. Oh, do you think the gas leaks? Go, make a phone call. And I had to consciously tell him, I will not do it. There are some things I will do, and एक point के बाद मैं इसके ज़्यादा नहीं करूँगी. और ये चीज़ के एडजस्टमेंट में 10 साल लग गए.
वो अभी तक मैसेज पहुंचा नहीं है क्लियरली. So, you know, these are the changes that we need in society. आप अपना परिवार चेंज करिए, आप अपनी वाइफ को इज्जत दीजिए, उसे प्यार से रखिए, वो बेटा वही सीखेगा. Look at the daughters-in-law are not committing as much violence as people would like us to believe, as the sons are apparently, because they are the empowered ones, not the daughters-in-law. Sure. You know, so. Thank you so much, ma'am. I think Thank you. Last but not the least, you really fired it up. So thank you so much. And I think just concluding, I think the institutions will do their bit, the families will do their bit, the society will do their bit. But I think it is for me, for you, and for us. हम सबको ये चेंज करना है. और इसमें मैं बस एक कैफ़ी आज़मी की छोटी सी नज़्म है जो कि आई थिंक डेडिकेटेड है एल्डरली वुमेन के लिए, वो पढ़ के ख़त्म करना चाहूँगा. कहते हैं, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फ़र्ज़ के भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर नर्म अदा तेरे लिए, जहरी जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे. Thank you so much. You've been a lovely audience. Sonali, over to you. Thanks so much, Imtiaz. That was such an enlightening panel discussion, and I think it got left in such a high note that we didn't feel like stopping, honestly. I think there's a lot of relatability in our own lives, at least in all the lives of the women I see sitting here. But thank you so much all for coming here. I would request my colleague Imtiaz to felicitate our panelists and request my colleagues Niliba and Deepa to come forward. आपको पता है ना किसको फोन करना है अगर प्रॉब्लम होगी. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mala, for being here. Thank you so much for setting the tone of the panel discussion, ma'am. I think we could have really heard you on and on. But what to do, time. And of course. Please do stay on stage. We will now formally launch the report. I request Mr. Kiran Karnik, our chairperson, to please come on stage. I request Ms. Rumchum Chatterjee, our vice chairperson for Helpage India, to come on stage. Anupama, who gave the presentation of the report, please do come on stage for the launch of the formal report. And of course, we have with us someone very hard to miss, Ms. Tagore, Sharmila Tagore, please do come on stage for the formal report launch. I would request everybody, I keep forgetting, to please keep your phones on silent. बीच बीच में थोड़ी आवाज़ें आती है. अगर आपको नहीं पता कैसे ऑफ करना है, जितने भी यहाँ पे यंगर लोग हैं ना, पकड़ लीजिए उनको, वो आपको हेल्प कर देंगी. I know. But come. So please. Gupta ji, the last and not the least, the representative of the Senior Citizens Confederation, the president of the Senior Citizen Council of Delhi, Gupta ji, please आइए ऊपर. Save the best for last. आइए गुप्ता जी. दीपा, आप इधर आ जाइए. एक उधर, एक इधर. आप इधर आ जाइए. एक उधर, एक इधर. नीलबा. हाँ. Yeah, I think height is a problem here.
I request Ms. Sharma to please stay on stage. Can everybody hear me? Yeah, I guess everybody can. Thank you. Thank you all for being with us here today. This is a very, very special moment for all of us. I just got scolded for telling all the younger people to help the older people to switch off their phones. And I think that just, also shows that, at HelpAge we do digital literacy classes where we ask younger people to help older people to teach them how to use their smartphones. I'm very happy to see here that a lot of the people, especially the ladies here, सब अपना phone लाइए, तो कोई SMS भी कर रहे हैं, तो it's just good to see at least the people here are digitally empowered. And without further ado, of course, I don't think I need to introduce the person who's sitting next to me, but I still will, just to do a little bit of a memory check. So she's someone who started a journey at the age of 14 when she entered the world of cinema with Satyajit Ray's acclaimed Bengali film Apur Shonchar in 1959. Since then, there has been no looking back. A national award-winning artist, her contribution to the world of cinema is undeniable. She continues to bring so many roles, stories, and characters to life through iconic and unforgettable performances in films such as Devi, Aradhana, Amar Prem, Daag, Kashmir Ki Kali, Mausam, Chupke Chupke. I mean, I could go breathless if I start listing out all the films, till her most recent release, Gul Mohar, which has received much acclaim. While she essays these varied roles on the silver screen, she also juggles multiple roles in real life, one of which is to come forward and support and give voice to causes which are close to her heart. Over the last decade, she has helped spread awareness on various issues, whether it be HIV, children, cancer support. Today, she's here with us to support the cause of older women and bring their issues and narratives to light, to address the unspoken invisibility of women who are a part of our everyday lives, but whose contributions often go unnoticed and their needs unaddressed. Well, we hope that today's discussion at least pulls back this curtain of invisibility as we as a society sit and take notice of these silent warriors, workers, and see them beyond their traditional family roles. Please give a round of applause to the gracious, gorgeous, and amazingly talented Sharmila Tagore, someone who has lived life in her own terms and continues to do so. I'm going to request her for an enlightening conversation to share her experiences and learnings in life. Thank you, Sonali. Thank you so much for inviting me here. I came a little late and I just heard the last three panelists, and they were so good. And I especially resonated with Professor Pinky Mathur, and I totally agree with her. But I think we need to take the men with us. Yes. I don't think we can fight it solo, nor should we. I don't believe in that. Men should be our partner, and we should appeal to their better selves. And I think together it will be possible. So actually, this is a cause that I firmly believe in, and that's why I'm here. You called me, I think, about 3 days ago. Yes. So I said, yes, I must be here. So, yes, you were going to ask me some questions, yes. I thought. So she's right. I called her 3 days ago, and it's very rare to get someone, who believes so strongly for a cause. And I'm just so glad that she's here with us today. So, 64 years ago, at the age of 14, you're a young, unfamiliar girl to the world of cinema. You started working. And at that time, it was virtually uncommon for a young woman to step out of a, protective environment and start working. What motivated you to, just start? You're very right, because at that time, in newly independent India,
what year are we talking about? 50 something. And it was frowned upon when women went out to work. So, and yet people were working. It's not that they were sitting at home. They had to work. They had to augment the family income because the parents were getting old. And Mrinal Sen and Ritik Ghatak were making so many films where the woman's money was important, but they didn't respect the woman. The family did not respect the woman. I mean, she didn't get married in Meghe Dhaka Tara. She dies of TB. In Ek Din Pratidin, in Mrinal Sen, how the woman is frowned upon because sometimes she's working late, she's coming late, etc., etc. So we've taken that many years later, we are in a different place. Things are arguably better. But as things change, much remains the same. So there is lots to be done, and I think film is an influencer, but also these forums and these conversations, I think we need to talk to each other a lot more. The women must talk to other women. The silence must be broken, and we must share, like Pinky shared and said things about her husband, saying that she's meant to look after the gas leak, etc. But I'm sure she feels comfortable talking like that. So that's, I think the husband helps her there. so I think it's a very, like there's a film called Court. I don't know how many of you have seen it. It's a Marathi film. Yeah. Now this lady is a lawyer. She goes to work every day and she's very good at her work. And then after that, she goes to the creche to pick up her son. And then she comes home, and then she's in the kitchen. But while she's cooking, she's on the phone. She's giving advice to her other women friends or whatever else. She's doing that. And then we see her coming to the sitting room where the son is sitting on a chair. The son is lying on the bed in a very relaxed fashion, about, I would say, 14, 15-year-old. And then there is the husband sitting on a chair. The girl is on the floor. They're all watching TV. And she serves everybody some appetizer. And then while going, she just fleetingly looks at the TV that she would also like to watch perhaps, but she doesn't. Then she goes to the kitchen and she's cooking, and then she feeds them. Then after, when everybody's asleep, she preps for the next day. She's doing her work. So she is an empowered person. Obviously she is literate, she's educated, she's working, she's bringing in home money, but she accepts that position. And as Pinky said earlier, if I may call her Pinky, I think I'm much older than her. So, you know, these things just don't manifest themselves. You know, these invisible women do not become invisible. So as she said, that we have to go back to the beginning. When a child is born, it's naked. It doesn't have anything. Then the social induction starts. And then a woman has to behave like a woman and a man has to behave like a man. Women are pretty, the man is strong. Man is brave. So all these epitaph starts, notion starts. And then women are not meant to talk too loudly because that's unfeminine. You're not supposed to dress in a particular way because that's not feminine. So all those things, so you have to take that into consideration. And when you say invisible, do we think ourselves as invisible? If we do not say that we are visible, why should anybody else say so? So we have to make our presence felt. So I was fortunate, as you said, why was I allowed to work
at the age of 14 in a film, for the reason because Satyajit Ray was making different kind of films. It was considered respectable, so there was no, I was allowed. So, but also the family was very forward looking, including my grandmother, At some point, I read in your questionnaire that you were going to ask me that who are my role models. So most certainly my grandmother was. And I'm 78 now. My grandmother was then, I think, a little older. So she was so emancipated in her thinking and so forward looking in her thinking. She didn't have beef herself, but her husband ate beef, so she cooked that for him. She always wore the sari in a Bengali way. She had no other language except Bengali, but she could make herself understood. She had no problem with that. So she was herself and she met all our friends. And later on, when she became really old, us sisters, she used to do crochet very well. So we tried to make a little, table napkins, etc., and sell them, and then give her some kind of money. And that was the first money that she earned, she told us. So, but I'm saying that if your family is supportive, and if you see every member of the family interacting with each other and not making a discrimination, like we were 3 sisters, and my father never really longed for a son, and never said, he said, my daughters are like my sons. So we never felt growing up any less. I went to Bombay to work at the age of 17, 18. I was not chaperoned like everybody else was. And I stayed alone in a hotel. I became a social suspect. But because I could do that, because of my family. And I knew who I was. It's so important to know who you are. I think, that's so well said. On a personal note, I think women need to support women a lot, and it starts, like you said, at a young age. Just like you said, your role model is being your grandmother, your mother. My role model is my own mother, who's here. And I've come from also upbringing where, girls are as good as boys, and, we're all working. And which brings me to my next question is, you've seen the world transform. The world has changed immensely in the last 20, 30 years. Digitization has come in, and today people are living longer. Women are living longer than men because, there is healthcare. The traditional roles that define them as mother, sister, wife, grandmother, they are still there. But, it used to be either that or they were elevated to the role of, goddesses like Ma Durga, Kali, strong, representation. Do you think that in today's day and age that there is a shift now in the roles that women play beyond the family circuit, whether it is in the corporate sector, in sports, in entertainment, or women in politics for that matter? Would you say that you see a change happening? Yes, again, I would go back to the same thing I said. There's a lot of changes for the better and more opportunities for women. There is still much, that the hierarchy of men is still there. Like a lot of companies globally are headed by women, and also in India. Everywhere there are women. But what we saw just now with the wrestlers, we think that have we really progressed? Because there's no visible support has come from any other sports male members or anything like that. So that is one thing. So, it's there, but it is still the male superiority down, like in the films, the male get, and even in Hollywood, they get paid more than the women. So all those things need to be addressed and changed, and they are changing. And now Neena Gupta, for instance, are getting wonderful roles. Dimple just now is in the Saas Bahu Flamingo. And she's the one
provides the heft to the movie. And earlier we had Surekha Sikri, we had Shushma Seth, we had Zora Sehgal. So they were wonderful. So there's always been those actors who were very, very good and had a very, very long life. I was fortunate to do Gulmohar. And I was asked that why didn't I work for so many years? But it's not just that you have to be visible on the screen. I was visible elsewhere. I was, talking about cinema in different forums. So I was always engaged with life. I never really retired from life. I may not have acted in films, but that is not the all and end all of everything. So as long as you are connected, you're informed, and you are engaged with the society, and you are able to do whatever little you can, I think all of us collectively, if we did that, that would make, you don't have to be at the pinnacle of your career, but at every level, if you can speak up for yourself and make your presence felt, I think that makes a difference. I think one of the biggest takeaways from what you just shared was you didn't retire from life. And I think that is the biggest thing that one can do, because it's our life, it's your life to choose how you want it to peak, how you want it to be, where you want to take off, where you want to just let it flow. And, while that is, that's been your journey, but do you think that it is easier for women who otherwise take a break from work? Because, there are a lot of women that I meet, whether they're looking after their young children, when they've just had a child for that matter, they take a break from work, and after some time, when the child is a little able enough, they want to come back. But are the opportunities there enough for them to come back after, let's say, a 5-year or a 10-year break for the woman to come back to work? It's very difficult, because if you're in a tech field or if you're in a whatever field, the world moves on. In 2 years, things are so different, and it's very, very difficult to catch up. So you must never really leave, ideally. And you have to keep in touch. Because, in my case, it's different, because, and I'm an actor, I can act at, if I get a role, I'll be able to act in any. But if you're in a, like I said, with Apple or, I don't know, any other, it's very techy, So it's very difficult to catch up, I feel. I may be wrong. So I think it's this caregiving and earning are two pillars, as Marianne Slaughter said. And that is where you need a house husband also. And you need that sharing. Share the load. Share the load. And that can be easily done. And a lot of today's modern young husbands are doing that. Like my director Rahul Chitela didn't come for the screening here because it was his time to look after the child. So when I said that, everybody clapped for him. So it's become, like Saif is very, very supportive. So they take in turns when Saif is going to work and when Karina is going to work. So somebody can be with the kids. Because even if you employ nannies to look after your children, that nanny is leaving her 10-year-old somewhere else. So it's in the patriarchal society, somehow the elderly and the young were always looked after, because we lived in this joint family, and I grew up in a joint family, and we longed to be on our own, really, because now these parents are constantly hovering over their children, and we had our little own time where I think our imagination had time to grow. Now every moment is spoken for, from music to this and Spanish and whatever, which is a good thing. But so what I'm saying is that in that joint family, we were always talking to somebody. There was always somebody at home. But now in a nuclear family, that is very difficult. So, but difficult, but not impossible. So you have to share I was about to say chore, not chore, but the responsibility of raising a child. So,
you know, ageism, this is something, while we're talking about feminization of aging, ageism is something that a lot of older people face. And have you ever witnessed it, or have you faced it, seen someone going through it, being judged or treated in a particular way because of their age? You know, we have to re-look at how we see age. You know, white hair, and immediately we say that this is, we look at it as a burden or as a decline. So we have to reframe that as a time, like now that I'm working less, this is an opportunity for me to do many things that I haven't done before. So to learn more things, to have more, look at future optimistically. Like you say about this tech things that some of us shy away from. But Soha was with me yesterday and she taught me a few things. So it's not impossible, it's not rocket science. It's just there is a laziness involved. But I'm just saying that we have to, but yes, that mindset, which is century old, is very ingrained in our society. You know, what will other people say? And everybody was talking about other people. If we take our parents to a government hospital, but I think AIMS is a wonderful institution, if you can get in, that is. And there are a lot of government institutions are really, really good. So it's they look after you better than the private. The private might be more comfortable and more expensive, but that doesn't necessarily make them. For burn, etc., Safdarjung is very good. We work very closely with acid survivors. We work very closely with domestic violence, with PCVC. They are based in Chennai. And they have their people at the hospital, so they know when a burn victim comes, and they're doing wonderful work there. And somebody said, I forget, that the police lady was talking about that, call us and we'll be there. And one day I got a call at about 12 o'clock at night, and, whispering that please, and I knew her, of course, and I'm just locked in a room and please send somebody, and, my life is in danger, etc. So we got into action. I called all my activist friend and everything. And police reached there in no time and he was absolutely drunk and was beating her up, and she had locked herself in the room. And the police wanted to arrest him, and she didn't want that. But despite that, the police took him to the police station, and the next day she withdrew her charges. So what will other people say? She would rather be married. Aap keh rahe the that people are changing, and now they rather walk away from that marital. But a lot of people want to stay in that abusive marriage because of other people. That dignity of the sindoor or whatever would change if she's on her own. And a lot of my friends also say that if you're like that, then you're prey to other men. Like your husband is protecting you from those eyes. So there are so many ways of looking at it, and so many, the kind of society that we live in, the way we are perceived, the way, all of us want to be good women. When we look at ourselves in the mirror, we want to be a good person. And that good, the definition of that good is like being a good wife and a good mother. And that means that you're not creating any boundary. And if you don't create that boundary with your children, then obviously when they grow up, they have that sense of entitlement to treat their mother as they want. In fact, what you said about, that of course was a husband and wife situation. We work with senior citizens, and one of the things, whenever we ask an older person that, if he or she is being abused, especially in the case of women, आपको लगता है कि elder abuse prevalent है? हाँ है. Now, abuse is such a thing that happens within four walls. It's not crime that happens outside. So obviously, either they have, gone through it, or they have seen someone closely, they've witnessed it. When you ask them, आपके साथ कभी हुआ है? नहीं. And when you ask someone who dares to admit that they have been abused,
रिपोर्ट किया है? नहीं, क्यों? घर का मामला है, घर में रहने दीजिए. So unless and until we speak up and speak up with each other and create this sisterhood and also have men as our partner, only then we can progress. There's no other way of going forward. You know, one of the things that is media, you know, you mentioned cinema. You know, media plays such an important role in shaping our perceptions. You know, we are, especially with OTT, it's constantly there. So, how do you think that, what role can media play in changing perceptions, how older women are viewed, and bring more focus to issues which are related to older people? Obviously, if the stories are told, there will be more conversation, there will be more awareness and more understanding of these things, and yes, they will do that. But you know, the audience is also male and women, so people who make commercial enterprises are very aware of that. But despite that, obviously women, I think, repeat films and they have more time to see films, so they are a good audience. So there are a lot of films are being made, and OTT is a wonderful place for these films to be made. So OTT is a, but if you see TV, and I mean, I'm a member of BCCC, the content is so regressive. They make it out as women are women's worst enemy. And that is so unfortunate. The government is doing something. They are also checking these films out, and then finally it comes to us. Geeta Mittal, who's a retired judge, is our chairperson, and people like Ira Bhaskar and Arundhati Nag and a lot of people, Tara Murli are members, were members. It keeps changing every 3 years. And when we see films like that, which is sitting in your house, they are, I mean, how can they even make? Sometimes we call them for discussion, saying that this should be changed, this should be removed, and they don't understand why. I mean, they argue knowing that they are, I mean, what they've produced, because commerce is overriding, and in these sort of rural areas, they are glued to the TV and encouraging superstition, various ways of how to kill a bride. Children are involved, one child being abusing the other child. I mean, they are so regressive. No, I think, I think one of the few things that we see is that, like you mentioned this, that particular, the court, where the woman went to work, came back within the kitchen, on the phone, constantly at it, multitasking. There's never any time off. There's never any time off. Her son is lying there, is relaxing. He's seeing what is happening in front of his eyes, but he hasn't really made an effort to say, okay, aap thoda din baith jao, main kuch kar leta hu. This is it. This is what I'm trying to say, that if she doesn't make an effort, she can easily come and sit there and let the dinner be 10 minutes late. She can easily ask the girl to come and help her. She can do a lot of things. She can get food from outside. She can do some things. Okay, maybe it's very expensive. But I'm just saying that she can also say that, please, I want a day off. Basically what you're saying is that the woman should also do, pehal karni chahiye. They should also take Yes, initiative. if we remain invisible, then other people will also call us invisible. Yeah, in fact, I'm glad you brought this up because, when we were thinking of, the campaign Main Bhi Hoon, and this was exactly one of the conversations I was having with Rohit, that when you're saying Main Bhi Hoon, who is saying it? So we were very clear that Main Bhi Hoon was not about the woman saying Main Bhi Hoon. She knows she's there. She knows she's going through it. It's for the people who are around her who needs to see that, she's there. And she wants them to know that Main Bhi Hoon. I know I'm there. But do you see that Main Bhi Hoon? So I think that is something, that is a message that we all want to give. But I know we're running short of time. But lastly, I'm just so happy that you're here, that the message that you want to give to both the men and the women who are present here today, the young and the old, how can they help empower older women today? What can they do? I think is first and foremost is not take away their agency. That recognize that they have agency, and they should respect their decision and give total support and be with them, but not
coerce them into their way of thinking, because that is convenient for them. You know, my children want me to leave here and go to Mumbai and live with them. Obviously. But I want to be closer to Patodi. I have my set of friends here. Your life is So my life is here. And we can meet. And they are busy in their own lives also. So I think that kind of negotiation should be there. I know it's convenient. If I suddenly fall ill, it's difficult for them to come. But then my friends are also, we have a family beyond our biological family. And our friends are also like our family. So I guess, and especially when we have known them for last 50 years and 40 years. So I think it doesn't take away, you don't have to feel guilty about it. It doesn't take away, it doesn't say I don't love them, I'm not close to my son is in Chicago while I'm having an operation. It doesn't mean anything. It's not for other people we are not living. It is our understanding with each other and our cooperation with each other. And what is priority? If I'm just having a cataract operation, I don't need my son next to me, right? But if I have life-threatening operation, yes, perhaps he should be here. So, etc. So it's all negotiation and understanding, but never push an elderly person what they don't want to do. And respect that they have a mind of their own and just support that and make that possible. It's quite easy to do that. And don't overprotect them either. I mean, hovering around them all the time. The helicopter children. Yes. Are you all right and all that? Yeah. That perhaps is not necessary. So thank you so much. I'm going to ask you to keep sitting here, and I am going to request our Vice Chairperson, Rumjun, to please come on stage and basically share a small thank you citation of appreciation. No, but thank you for calling us. I really enjoyed your, not enjoyed is not the word, learned a lot from listening to others and finding a connection and like-mindedness. Yeah, yes. Thank you. A round of applause for this amazing interaction. I would request Mr. Kiran Karnik to please come on stage, our chairperson, to hand over the Helpage Memento. Kiran, if you could come on stage. Kiran actually surprised us today. Please. Just stand. Thank you. That's lovely. Ladies and gentlemen, the little memento that we have presented to Madam has a little bit of a write-up which I thought we would share with you. So here's what it said. Thank you, Madam, for supporting the cause of older women who are often the lost and last in line, and gracing us with your presence to mark World Elder Abuse Awareness Day. We truly appreciate the valuable, thought-provoking, and inspiring insights you shared with us during the launch of our national report on women and aging, invisible or empowered, today. You brought alive the sentiments of the great Rabindranath Tagore, who in Ghare Baire wrote, "For we women are not only the deities of the household fire, but the flame of the soul itself." As an embodiment of an empowered and independent woman and a symbol of grace and dignity, you helped bring into the spotlight the often forgotten issue of older women and their rights. Women who are the invisible and silent warriors of our lives. Thank you once again, ma'am, for making our event so special.
Ladies and gentlemen, may I please seat? Ladies and gentlemen, please may I request you to take your seats. We have a scintillating performance by a young group of kids named the Bongaya Samaj Bharatnatyam group. So therefore, I please request you to bear with us as we clear the stage. We have 6 young performers, Miss Paulami Mondal, Miss Aradhya Kumari, Miss Pranavi Chopra, Miss Pratipi Sengupta, Miss Kritanjali Das, Miss Pratibha Das. May I please request you all to please take your seats. It gives me great pleasure to introduce Kalashri Devasmita Thakur, who put together this performance. She is a Bharatnatyam artist with 8 years of teaching experience. She sought professional training for over 11 years under Padma Bhushan awardee gurus Dr. Saroja Vidyanathan and Guru Rama Vidyanathan. Kalashri Devasmita Thakur is a faculty member of Ganesh Nethalaya and also is a Doordarshan artist. She's seeking to leverage passion and expertise in the role of performing artist through stage performances, lecture, demonstrations, and workshops. For 7 years, she learned the Manipuri dance form under Guru Shipra Mukherjee. Simultaneously, she trained herself in Hindustani classic music under Guru Sontabrata Nandan. She completed her Masters in Public Administration and is currently pursuing Masters in Bharatnatyam. I would request the audience present here to please welcome the group with a round of applause. This is for you.
दरिया के पार लगाऊं, दरिया के पार लगाऊं, दांव पर लगी हो जिंदगी, मैं फिर भी मुस्कुराऊं, मैं फिर भी मुस्कुराऊं। अब किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, आशाओं के पर खुले हैं प्यार, दिल चाहे भर लूं रात और छू लूं आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, आशाओं के पर खुले हैं प्यार, दिल चाहे भर लूं रात और छू लूं आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। I would request everybody to give another rousing round of applause to the young kids here. I would like to take the names again. This is Miss Paulami Mondal, Aradhya Kumari, Pranavi Chopra, Pratibhi Sengupta, Kritanjali Das, and Pratibha Das. Please, one more round of applause. Thank you. Youngest one. Thank you, Kalashri Debasmita Thakur, for putting this together. Thank you so much. I would like to call upon, thank you. I would like to call upon our Mission Age Care Head, Livelihood, Mr. Rajeshwar Devrakonda, to say the vote of thanks, please. मैं ये सब पढ़ने वाला नहीं हूँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारी है, मेरा चाचा चाची मौसी लोग पुप्पी लोग यहाँ बैठे हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए, और यहाँ पे हमारे बुलाव पे जो आए हैं पैनलिस्ट, हमारे जो चेयरपर्सन और हमारे ही वाइस चेयरपर्सन, सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जो मीडिया के मित्र है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ, एक मिनट बोला हूँ, ये पढ़ूंगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, विजुअल और प्रिंट मीडिया के, उनके लिए, और हमारी जो कश्मीर की कली, सबको लेके चली गई, ठीक है। बट द की पॉइंट दैट वी कैप्चर्ड, जो भी निकल के आया वो है दो चीज़। पहला हुआ है हार्डवेयर अपग्रेड, जो हमारे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है फैमिली में जो है, और दूसरा जो है उसको चेंज होना है। दूसरा जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेड, क्यों हमारे जो घर में जो हमारे मम्मी है, हमारे बेटी है या हमारी बहू हैं, इनका जो मानसिकता है वो चेंज होना है, और भाई लोग का भी। जब तक ये नहीं हुआ, कुछ जो दिलचस्प, कुछ तो जाना पहचाना हुआ था, अभी डेटा साथ में आया है। बट अगर ये सिचुएशन चेंज होना है, अर्बन में हो या रूरल में हो, ग्रामीण में हो या शहरी क्षेत्र में हो, हमारे घर में हो या बगल वाले घर में हो, अगर ये चेंज होना है तो एक हार्डवेयर का भी चेंज होना चाहिए। मतलब समाज में जो सिस्टम्स बने हुए, इंस्टीट्यूशन बने हुए, वो भी चेंज होना है। और पहली बात है, महिलाएं अपने आप को एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। आप जैसा बोलिए, अगर वैसा करेगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी का जो सिस्टम जो है ना, ढांचा, उसमें गड़बड़ बहुत होता है। बट दैट स्पेस द वुमेन हैज टू डिमांड, एंड लाइक शेमरा जी फाइनली सेड इज यू हैव टू नेगोशिएट दैट स्पेस, कि पहले से बताओ कि सो फार एंड नो फर्दर। एंड फाइनली हम सबको एक आम का पेड़ का कहानी सुना के हम सबको आपको भी, मेरा जनरेशन तक पता नहीं, अगला जनरेशन में पता है कि आम का पेड़ था, उसने फल दिया पत्थर मारने पे भी, और फाइनली उसका बुढ़ापे वो उसका जड़ दिया, उससे मतलब अपना जलाया। तो अपना बच्चा वो नहीं सीखा कि आम का पेड़ लगाओ, इसने ये सीखा है कि जो बुजुर्ग है उसका फाइनल स्टेज में भी उसका इस्तेमाल करो।
और उसको इस्तेमाल करने के लिए हम ही लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज भी पता है मुझे इतने सारे बुजुर्गों का कि बच्चा है अमेरिका में तो उसको नानी चाहिए वहाँ, तो यहाँ से चले जाती है माँ। तो जब तक आप नहीं बोलेंगे कि ये देखिए हम इतना तक कर सकेंगे, इससे ऊपर नहीं, और आपसे ये उम्मीद है, और कहीं से मैंने सुना है कि आपको समय देना चाहिए। आपके अभी हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन मेरे उम्र के अगर हम हमारे बच्चों को कुछ क्वालिटी टाइम देंगे तब जाके वो क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। और फाइनली आप लोग को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जो बच्चे हैं उनको बोलना है कि कम से कम घर जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, लंच तैयार है, शुक्रिया। अरे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईआईसी के जो स्टाफिंग है, जो स्टाफ है जो हमको मदद किए हैं, वो होता है ना, आपको देख रहा था कि सब लोग इधर जाएंगे बट, सो सबको माइक अरेंजमेंट जो किए हैं सबको धन्यवाद।